बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। उमेद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाकु हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में, करार में। कुर्बाश जेकॾहिं न आहियो त करार जेकॾहिं न आहे, जेकॾहिं को मामिलो को मसइलो मुंहिंजे लाइ त पोइ आउं सदाईं हिन प्रोग्राम में चवंदो आहियां ऐं सदाईं इहा सुठी ॻाल्हि मूंखे लॻंदी आहे जो असीं तव्हांजे लाइ दिलि सां दुआऊं कंदा आहियूं ऐं जेकी दुआऊं दिलि सां कबियूं आहिनि उहे अघंदियूं ज़रूरु आहिनि, देरि ज़रूरु थींदी आहे, पर इनशाअल्लाह अनक़रीब अव्हां जे अङणनि ते बि जमाला थींदा, अव्हां बि ख़ुशबाश ज़िंदगी गुज़ारींदव। जीअं ॿियनि खे ॾिसी चवंदा आहियो त अलाह साईं अहिड़ो घरु असांखे बि ॾे, अलाह साईं अहिड़ी गाॾी असांखे बि ॾे, अलाह साईं अहिड़ी आसाइश असांखे बि ॾे, असीं बि सुख जो साहु खणूं, असीं बि चैन सां रहूं, असीं बि मज़े सां रहूं। सो मज़ो अचण वारो आहे ज़िंदगीअ में। हिकिड़ो मौक़ो अलाह साईं सभिनी खे ॾींदो आहे, पर उन मौक़े ते थोरो गौर ज़रूरु कजो। कॾहिं ईअं बि थींदो आहे जो असीं अणॼाणाईअ में, असीं ईअं खणी चऊं पंहिंजी मसरूफ़ियत में, या असीं बिल्कुलु ई उन पासे ध्यानु न ॾींदा आहियूं त हिकिड़ो मौक़ो असांखे जेको मिलियल हूंदो आहे उहो गुज़री वेंदो आहे। सो जेकॾहिं कोई अहिड़ो चांस तव्हांखे मिले थो, किथे तव्हांखे सम्झ में ॻाल्हि अचे थी त हिते इहा अपॉर्चुनिटी मां जेकॾहिं अवेल कयां थो, उन खां पोइ जेकॾहिं मां हीउ कमु स्टार्ट कंदुसि त थी सघे थो त मां ख़ुशहाल थियां, त उनखे विञाइणो हथां न ॾिजो। ऐं सुबुह जो पहर आहे, सुबुह जे पहर में थोरी वॉक बि ज़रूरु कंदा कयो, थोरी वर्ज़िश बि ज़रूरु कंदा कयो ऐं पंहिंजी सिहत जो तमामु घणो ख़्यालु रखंदा कयो। ईअं न आहे त बसि खाइणो आहे, वरी बसि सुम्हणो आहे, बसि ज़िंदगीअ जा इहे कमकार करे बसि करार वठिणो आहे, ईअं न आहे। पंहिंजी सिहत खे जेकॾहिं फिट कंदो ऐं जेकॾहिं वर्ज़िश कंदो त मूं किथे पढ़ियो हुयो त जेको ताज़ो जेको सर्वे थियो आहे उन में इहो बि आहे त जेकॾहिं मानी तव्हां घटि खाओ था ऐं तव्हां वॉक वधीक कयो था ऐं जेकॾहिं तव्हां चहलकदमी वधीक कयो था, वर्ज़िश वधीक कयो था, त पोइ दिलि जी बीमारी बि तव्हांखे घटि थिए थी ऐं तव्हां पंहिंजी उमिरि खां बि थोरा घटि माना नंढा लॻंदव, थोरा पंहिंजी उमिरि खां घटि लॻंदव। सो इहा वॾी ॻाल्हि न आहे। अॼुकल्ह माण्हू उमिरि हूअं ई लिकाईंदा आहिनि। सो जेकॾहिं तव्हां वर्ज़िश कयो ऐं पंहिंजी उमिरि खां थोरा घटि लॻो त इहा अञा भली ॻाल्हि आहे। अॼु वर्ल्ड हार्ट डे बि आहे। दिलि जा जेके मर्ज़ आहिनि, दिलि जे मर्ज़नि ते ज़ाब्तो कीअं आणिजे, छा कजे, इन बारे में अॼु हिकिड़ो ख़ासि स्पेशल ॾींहुं बि मल्हाइनि पिया। पर दिलि जो मर्ज़ वधे ई न, इन खां बहितर आहे त तव्हां अहिड़ियूं शयूं बि न खाओ जेकी सणभ वारियूं हुजनि, जंहिंमें तमामु घणो जेको आहे सो ईअं खणी चऊं गिहु हुजे। सो अक्सर असांजा दोस्त सुबुह सां वॾो हिकिड़ो ज़बरदस्त क़िस्म जो नाश्तो कंदा आहिनि। सो उन में गिहु बि लॻल हूंदो आहे, पराठनि खे पोइ मज़ो वठंदा आहिनि, ज़िंदगीअ जो वठणु घुरिजे, पर एॾो बि न जो वरी मज़े में अॻिते हली करे तकलीफ़ुनि में पाण शुमार थी वञूं। जेकॾहिं तव्हांखे दिलि जो को बि आर्ज़ो आहे त फौरी तौर ते पंहिंजे वेझे कंहिं डॉक्टर खे ज़रूरु ॾेखारियो। के दोस्त चवंदा आहिनि बाबा सीने में थोरी तकलीफ़ थी आहे ऐं कॾहिं कॾहिं सीने में जलन बि थिए थी, ऐं के वरी चवंदा आहिनि साईं ब्लड प्रेशर जो आर्ज़ो आहे, शुगर जो आर्ज़ो आहे, त उन्हनि ते वरी दिलि जो मर्ज़ जल्दी अटैक कंदो आहे। सो दिलि जे मर्ज़ खे हमला आवर थियण खां पहिरियां तव्हां एहतियाती तदाबीरूं जेकी बि आहिनि उहे वठी वठो ऐं दिलि जो को बि नंढो जेकॾहिं को मामिलो आहे त उहो हल करण जी कोशिशि कयो, ईअं इग्नोर न कंदा कयो। कॾहिं कॾहिं के दोस्त अहिड़ा बि मिलंदा आहिनि जेके चवंदा आहिनि पासे में सूरु पवे थो पर वरी मां ठीकु थी वियो आहियां। सो वरी जेको ठीकु थी वियो आहियां इन ॻाल्हि खे जेकॾहिं तव्हां हिते ई छॾे ॾींदव त पोइ अॻिते हली करे पोइ सफ़ा ठीकु न थींदव। सो वरी ठीकु थियण खां बहितर आहे त वरी कंहिं डॉक्टर खे तव्हां सुठे खे ॾेखारियो त तव्हांजा जेके दिलि जा मर्ज़ आहिनि उहे जेकी तव्हांजा मसइला हल थी वेंदा। दिलि जा वाल बि हूंदा अथव ऐं जेकॾहिं दिलि जो वाल बंदि थी वेंदो आहे हिकिड़ो बि त वॾो हिकिड़ो मसइलो थी वेंदो आहे, ऐं जेकॾहिं 2-3 वाल बंदि थींदा त पोइ डायरेक्ट बाईपास थी वेंदो आहे माण्हू। सो बहरहाल इन्हनि मर्ज़नि खां बचाइण जे लाइ तव्हांखे दिलि जे मामले में थोरो एहतियात करणु घुरिजे। ऐं ॿियो वरी दिलि जो मर्ज़ इहो बि आहे, दिलि कंहिंसां लॻाइण बि न घुरिजे। सची ॻाल्हि इहा आहे, जेको माण्हू दिलि कंहिंसां लॻाए थो न उहो बि सम्झो त दिलि जे मर्ज़ में ई मुब्तला थी वञे थो। कंहिं शाइर चयो आहे दिलि जो मरीज़ बणाए ऐं हाल फ़क़ीरी कराई, अञा बि बेवफ़ा मां भली चओ भली चओ। ऐं कंहिं शाइर वरी ईअं बि चयो त नथी ॿी का वणे महफ़िल, नथी ॿी का वणे महफ़िल, ओ मिठड़ा ॾाढी आहे तोसां दिलि, ओ मिठड़ा ॾाढी आहे तोसां दिलि, नथी ॿी का वणे महफ़िल। ऐं कंहिं शाइर वरी चयो त दिलि मूंखे माराए छॾी मां काॾे वञा। सो दिलि अक्सर माराईंदी बि आहे ऐं दिलि ते कंट्रोल बि न रहंदो आहे। ऐं अक्सर चवंदा आहिनि त अखियुनि जी शुरूआति थींदी आहे, पोइ मामिलो दिलि ताईं पहुचंदो आहे ऐं पोइ दिलि वेल में हूंदी आहे ऐं दिलि अटकी पवंदी आहे त पोइ निंड फिटी वेंदी आहे। सो निंड फिटी वेंदी आहे त पोइ माण्हू बीमार बि थी पवंदो आहे, पोइ नाचाकी बि थी वेंदी आहे ऐं सुकून बि बर्बादु थी वेंदो आहे, परेशानी घर करे वेंदी आहे। ऐं जॾहिं परेशानियूं वरी घर करे वेंदियूं आहिनि वरी बि मामिलो दिलि जो ई अची वेंदो आहे। सो दिलि जो तमामु घणो ख़्यालु रखो ऐं दिलि जंहिंखे ॾियो था त उनखे चओ त बाबा हीअ सुठी हिकिड़ी साफ़ु सुथरी दिलि आहे, इन जो तव्हां ख़्यालु रखो। ऐं कंहिं शाइर वरी हीअं बि चयो न त दिलि पाली हुयमि वॾे नाज़नि सां, दिलि पाली हुयमि वॾे नाज़नि सां, पर फाथी वञी दगाबाज़नि सां, पर फाथी वञी दगाबाज़नि सां। सो कंहिंखे दिलि ॾियण खां पहिरियां 100 दफ़ा सोचिजो। अॼुकल्ह जे प्यार में बि मिलावट आहे दोस्तो, जेकॾहिं कंहिंखे दिलि ॾियो त सोचिजो सम्झिजो। सो सोचे सम्झी करे दिलि जे मामले खे अॻिते वधाइजे ऐं दिलि ते थोरो कंट्रोल बि कजे। हरू भरू बि माण्हू दिलि फेंक बि न थिए। सो उर्दू में चवंदा आहिनि दिलि फेंक आदमी। सो दिलि फेंक बि न थियो ऐं दिलि ते थोरो कंट्रोल कयो, दिलि जी बीमारियुनि खां बचो। अॼु दिलि जी बीमारियुनि जा ख़ासि जेके मर्ज़ आहिनि
दिलि जा जेकी मर्ज़ आहिनि उन्हनि बीमारियुनि ते पाण थोरो फोकस कयोसीं, छो त अॼु उहो ॾींहुं बि आहे। ऐं इन खां सवाइ पाण अॼु जेका दिलि वठां ॻाल्हि कंदासीं उहा इहा आहे त एजुकेशन तमामु घणी इंतिहाई अहम आहे, तालीम इंतिहाई अहम आहे। जेकी बि माण्हू तव्हां ख़ुशहाल ॾिसो था या कंहिं मक़ाम ते ॾिसो था ऐं तव्हां ईअं सोचो था त यार इहो हिते छो आहे, त सची ॻाल्हि इहा आहे त उन तालीम पिराई, उन महिनत कई ऐं उन महिनत जो नतीजो आहे ॾींहुं राति पढ़ियो हूंदो। ऐं आउं त ईअं चवंदो आहियां त पहिरियां जेकी तव्हांजा इब्तिदाई जेकी साल आहिनि, जेका एज आहे नौजवानी वारी, उन में जेकॾहिं तव्हां काफ़ कटियो था ऐं तव्हां थोरो पंहिंजो पाण खे आसाइशनि खां थोरो परे कयो था, सुकून खां थोरो परे कयो था ऐं दिलि लॻाए पढ़ो था, कंहिं फील्ड में महिनत कयो था, त पोइ जेकी तव्हांजो मुस्तक़बिल जेको आहे, तव्हांजो मुस्तक़बिल, तव्हांजो ईंदड़ नसल जो मुस्तक़बिल शादो आबाद थी वञे थो। सो अॼुकल्ह जी जेका ईअं खणी चऊं त मसरूफ़ियत जेका तव्हांजी आहे हरूभरू वारी, उनखे छॾे करे पंहिंजे कमनि में ध्यानु ॾियो ऐं ख़ासि तौर ते तालीम खे तमामु घणो फोकस कयो, पंहिंजनि ॿारनि खे पढ़ायो। स्कूल खुली विया आहिनि ऐं जेकॾहिं कोई बि तव्हांजो ॿारु अञा स्कूल न पहुतो आहे या तव्हां अञा लेज़ी आहियो या के माण्हू ईअं बि सोचनि था, वरी ॿ चारि माण्हू मूंसां मिलिया, मूंखे चयूं पिए त यार स्कूल त खुली विया आहिनि पर ॾिसूं था मतां वरी बंदि थी वञनि, हरूभरू ॿारनि खे छो मोकिलियूं हाली। अड़े बाबा खुली विया आहिनि 8 ॾींहं 10 ॾींहं, इहे बि पढ़ंदा न भला, के वरी इंतज़ार में यार मतां हुकूमत वरी ऐलान करे सो मतां बंदि थी वञनि, इन करे ॿारनि खे हाली नथा मोकिलियूं। अञा हफ़्तो इंतज़ारु था कयूं त पकी माना ॻाल्हि थी वञे त स्कूल वाक़ई खुली विया आहिनि। सो पकी ॻाल्हि आहे, स्कूल खुली विया आहिनि ऐं एतिरो इंतज़ारु बि न कंदासीं, छो त 7-8 महीना थी विया आहिनि, तालीम इलाही जेको आहे सो पोइ त पइजी वई आहे पंहिंजी। सो तालीम खे अॻिते वधाइण जे लाइ स्कूल पंहिंजा रवादम आहिनि, SOPs ते अमल थिए पियो, पर स्कूल ऐं प्राइवेट स्कूलनि जो बि थोरो मसइलो हले थो। प्राइवेट स्कूल्स चवनि था त असांखे फीस मुकमल तौर ते ॾिनी वञे, हुकूमत चयो आहे त 20% तव्हां ॾियो, ऐं किथे किथे ॻाल्हियूं इहे ॿुधण में अचनि थियूं त किथे किथे ॾंद चक बि थिए थी पेरेंट्स ऐं प्राइवेट स्कूल माफ़िया मां इन सेंस में चवां थो त उन्हनि खे थोरो ख़्याल बि नथो थिए कॾहिं कॾहिं। को ग़रीब आहे, को मिसकीन आहे, को मज़दूर आहे, को पोरियत आहे, उनखे बि पढ़ाईअ जो हक़ आहे। ऐं कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त किन स्कूलनि खे कोटा बि मिलियल हूंदी आहे हिकिड़ी, जिन में 10 खां 20 जेकी शागिर्द आहिनि ग़रीब, उहे उन्हनि खे पढ़ाइणु घुरिजनि, पर उन्हनि ॻाल्हियुनि ते बि अमल थींदो आहे न। पर सो इन समूरनि मामलनि ते पाण अॼु डिस्कस बि कंदासीं। मोज़िज़ महिमान असां सां गॾु आहिनि, उन्हनि मोज़िज़ महिमाननि जो तव्हां सां तारुफ़ कराईंदो हलां। सभ खां पहिरियां जेको मोज़िज़ महिमान मुंहिंजी दीद जे साम्हूं ऐं तव्हांखे TV स्क्रीन नज़र ईंदो, पाण प्रोफेसर आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते प्रिंसिपल बि आहिनि बॉयज़ डिग्री कॉलेज कासमाबाद जा, प्रोफेसर महबूब सुमरो साहिब, उनको भली कार चवंदा। अस्सलाम वालेकुम। साईं कीअं आहियो? ठीकु आहियो? साईं दुआ तव्हांजी, साईं वॾी महिरबानी, लख तोरा तव्हां असांजे प्रोग्राम में आहियो। ऐं साईं जन सां गॾु ई प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक सुमरो साहिब बि गॾु वेठा आहिनि, प्रोफेसर आहिनि पाण बि डिग्री कॉलेज कासमाबाद जा। सो साईं तव्हांखे भली कार चऊं था। महिरबानी। तव्हां माशाल्लाह सीनियर अदाकार डायरेक्टर बि आहियो, पुराणे PTV में माना तव्हांखे ॾिसंदा हुआसीं, हाणे को PTV थोरो माना हेॾो हेॾो थी वियो आहे, चैनल अचे ई नथो किथे, न त ॾिसूं हा। सो अब्दुल रज़ाक सुमरो साहिब तव्हांखे वॾी महिरबानी, तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में आहियो। ऐं जेको टियों महिमान आहे असांजो, उहो पाण इंसान दोस्त बि आहे, सुठो समाजी वर्कर बि आहे ऐं ख़ासि तौर ते जेकी मुल्की मामला, सियासी सूरत हाल, समाजी सूरत हाल, कराची जी सूरत हाल ऐं जेकी बि आम माण्हुनि सां जेकी परेशानियूं आहिनि, जेकी मसइला आहिनि, उन्हनि ते पाण गहरी नज़र, गहरी निगाह विझनि था ऐं उन ते सुठो ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं मसइलनि खे हल करण जी कोशिशि बि कराईंदा आहिनि। सो तर्जिया निगार बि आहिनि, पाण भली कार चऊं था केस मंसूर शेख साहिब के। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। ऐं सुठा कलाम ॿुधाइण जे लाइ असां सां गॾु हूंदो आहे साईं मोहरम नाज़ साहिब। अॼु बि मोहरम नाज़ साईं तव्हांखे भली कार चऊं था। सर महिरबानी, बस सलाम। तव्हां त हूअं ई अकेला आहियो, पर असां 2-4 ॾींहं थी विया त अकेला न विया, अॼु वरी अकेला थी विया। न असां तव्हां सो मतां काथूं जेको आहे सो वावर थी पवे, सो पाण वठूं था निड़ी साई, चांहि बि पीऊं था, तव्हां बि चांहि पीओ ऐं मोटी अचो, ॾाढो सुठो प्रोग्राम थियण वारो आहे, मिस न कजो, असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो। सलाम सिंध। जी भली कार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में मोटी आयासीं तव्हांजी ख़िदमत में। तव्हां अॼोको प्रोग्राम बि ज़रूरु ॾिसंदव ऐं जेकॾहिं को सवाल आहे कचहरी जो आगाज़ कयूं था केस खां। केस भाई आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं माशाल्लाह से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर नेक जो तमन्ना होती है ना वो पूरी होनी चाहिए इंसान की। सो किस हवाले से है ये? तालीम के हवाले से, फीसिस के हवाले से है? माशाल्लाह प्रिंसिपल साहब आए हुए हैं और इनसे बड़ी अच्छी डिस्कशन होगी। आजकल हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, सईद गनी साहब से भी मुलाकात हो रहे हैं। मैं एम रियली प्राउड ऑफ सईद गनी कि वो हर कॉलेजेस स्कूल्स में जा रहे हैं, डेली विजिट कर रहे हैं, SOPs को देख रहे हैं।
دیکھیں اس وقت فائنینشیل کرائسس پیرنٹس کو بہت زیادہ ہوا ہے صحیح اور جو بچے ہیں دے آر ویری اسکیئرڈ کہ ان کے پیرنٹس کے پاس فیسز کے پیسے نہیں اور اگر ہم جائیں گے تو دوسرے اسٹوڈنٹس کے سامنے انسلٹ نہ ہو. ڈیفینیٹلی بچے فیل تو کرتے ہیں اور پیرنٹس اس طریقے سے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو ہم اس کے لیے بہت ایفرٹس کر رہے ہیں کہ کسی طرح پیرنٹس یا اسکول والے انسٹالمنٹس کر دیں. گورنمنٹ نے 20% کا کہا ہے کہ جو پینڈنگ فیسز ہے اس میں 20% لیس کریں, بٹ اسٹل دے ڈونٹ ہیو, کیونکہ دے آر دا پیرنٹس آر جاب لیس. فادر کے پاس جاب نہیں ہے, مدر کے پاس جاب نہیں ہے, اور وہ بہت ہیوی کرائسس آیا ہوا ہے اور گھروں کے رینٹلس نہیں ہیں. تو میں نے ایک تو سارے اسکولز ایسوسیشن سے بھی میں ملا تھا, میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ جو آپ لوگوں نے ایک سب سے بڑا ٹرینڈ لائے ہوئے ہیں فیئرویلز کا, ایونٹس کا, جو بچوں میں بہت کمپلیکس دیتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کالجز ادھر یہ والے ایونٹس جو ہیں جو ایک فیشن شو اختیار کر گئے ہوئے ہیں, یہ ایونٹس ختم ہونے چاہیے. فیسز دے نہیں پا رہے پیرنٹس اور بچوں کی خواہش کی وجہ سے وہ پھر ان ایونٹس کے لیے اتنا سپینڈ کرتے ہیں, کمپٹیشن ہوتا ہے کون سا سیل فون اس کے پاس ہے, کون سا ڈریس اس نے پہنا ہے, کون سا شوز اس نے پہنے. تو ہم اس کے لیے بہت ورکنگ کر رہا ہوں میں, اور میں بہت سے اسکول کالجز میں جاتا ہوں جن پیرنٹس کو ایشوز ہوتا ہے, اپنی طرف سے فیسز جمع کراتا ہوں, نہ ہو تو ان کالجز سے انسٹالمنٹ پلان لیتا ہوں اور کچھ جمع کرا کے ان کو آگے لنگر آن کرتا ہوں, تاکہ بچوں کی ایجوکیشن ہونی چاہیے متاثر اور ہاں بالکل دے شوڈ بی. اور میں کہتا ہوں پرنسپل ٹیچرز کو خود بھی اس میں لینا چاہیے رول, کہ جو نیڈی ہیں ڈیفینیٹلی وہ ساروں کو چھوڑ تو نہیں سکتے, انہوں نے بھی فیسز دی ہوئی ہیں, انہوں نے بھی رینٹلس دینے, کے اے سی کے بلس دینے ہیں, گھروں کے ان کے بھی ایکسپینسز ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, لیکن ان کو فی الحال. اور پھر میں نے کل پرائم منسٹر سے بھی ہر چینل پہ ہر فورم پہ ایک اپیل کی ہے کہ ایک دفعہ آپ 12,000 والا سسٹم دوبارہ ریوائز کر دیں. اچھا قومی کے پیسے ہیں نا سر, آپ نے پہلے بھی دے دیا, مین لوگوں کو مت دیں, ایریاز میں دیکھ لیں, ایک ایریاز میں دیکھ لیں, گوٹھوں میں دیکھ لیں. اس وقت لوگوں کے جن کو گھروں میں پانی آ گیا تھا ان کے فرنیچر مینٹیننس کے پیسے نہیں ہیں, چھتیں ٹوٹ گئیں ان کے پاس پیسے نہیں, کچھ نہ کچھ ان کو بریدنگ ہو جائے گی ان کے لیے. اور یہ اس کے لیے میں کافی کام کر رہا ہوں, اور میں نے الحمدللہ بہت کوئی اوور 200 گھروں کی رینوویشن. یا تو پرائیویٹ اسکولز کے لیے کوئی پیکیج دینا چاہیے, ڈیفینیٹلی پھر بچوں کی فیس لینی نہیں بینک چاہیے. سے بھی بات کر رہا ہوں کہ ایون جیسے بہت سے کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں کہ جو اسکول کی فیس بونس پوائنٹ سے آ جاتی ہے, کہ وہ اس طرح کا لون لے آئیں کہ مینز انٹرسٹ فری ہو جسٹ فار دا اسکول, اور ان کا واؤچر ہی اسکول کی فیسز کے لیے بنے, صحیح ناٹ فار اینی تھنگ ایلس. کیونکہ اسٹیٹ بینک کو بھی اس میں اسٹینڈ لینا ہے, ان کے ساتھ بھی میں کافی ڈسکشن کر رہا ہوں کہ وہ پیرنٹس کو ہی دے دیں جو اسکول میں بھی جمع کرا دیں, اسکول والے بھی جتنا لیس کر سکتے ہیں وہ کر دیں, انسٹالمنٹ کر دیں, کہ بچوں کی ایجوکیشن سٹارٹ ہو. بہت سے لوگ جو مس ہو رہے ہیں, بچوں کی اٹینڈنس کم ہے, یہ کووڈ کی وجہ سے نہیں ہے, فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے بھی ہے. جن کو ریزلٹس نہیں دے رہے اسکول والے, تو کووڈ والا سسٹم تو ختم ہو گیا, اب جو فائنینشیل کرائسس ہے اس کی وجہ سے بچے اسکول کم جا رہے ہیں. یہ آپ اپنے ذہن سے, میں نے بہت وزٹ کیا, ہر ایریا کراچی کا گیا ہوں, ہر پیرنٹ سے ملا ہوں, ڈیلی مجھے 100 ریکویسٹ آتی ہیں. اس کے لیے میں اپلیکیشن بھی سعید غنی صاحب کے پاس لے کے گیا, انہوں نے بھی ڈسکشن کی ہے پرائیویٹ اسکول سے کہ آپ اس کو کریں. پرائیویٹ اسکول والے خود کرائسس میں ہیں, ان کے ٹیچرز کو چھوڑ چکے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں. مسئلہ تو ہر کسی کے پاس ہے, لیکن بہرحال بچوں کو تو پڑھانا ہے نا سر. یہ تو ہے. اسٹیٹ بینک کو بھی کہا ہے, پرائم منسٹر کو بھی اپیل کیا, ان کو بھی لیٹر لکھا ہے, تو انشاءاللہ یہ سولوشن تو آئے گا. اور لیکن آپ جو اسٹینڈ لے رہے ہیں, تو جب تک آپ اپنا اسٹینڈ لیں تو تعلیمی ادارے کھل گئے, اسکولس اوپن ہو گئی, تو یہ تو فیسز وغیرہ تو بہت سارے پیرنٹس نے ادھر ادھر قرضہ ورزہ لے کے جمع بھی کرا دیا, نہیں کروا پا رہے سر. 6 منتھ سے بھی وہ قرضہ لے کے گھر گزارا کر رہے ہیں. بڑے سفید پوش لوگ ہیں کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, ان کے بچوں کی فیسز 1 لاکھ تک پہنچی ہوئی ہیں, کسی کی 15,000. اب ان کا تو مائنڈ میں تھا نا کہ ایک فادر ہے, وہ 1 لاکھ روپے کی سیلری لے رہا ہے اور بچے کو 15,000 والے اسکول میں پڑھا رہا ہے. جب وہ جاب لیس ہوا تو اس کی سیونگ 6 منتھس میں ختم ہو گئی. اب جب اسکول کھولے ہیں تو ایک دم وہ کھڑے ہوئے ہیں, تو فیملی سے ہیلپ جو لیتے رہے, لوگوں نے بھی ہیلپ ختم کر دی, اور اب جو ہیلپ کر رہے تھے وہ بھی ہیلپ مانگ رہے ہیں. مطلب اس کا سولوشن صرف یہ ہے کہ بینکس کچھ لون دیں, جتنے منتھ دیں, 3 فیسز جتنا دیں اسکول کی فیس دے کے, اور پے آرڈر بنا کے اسکول فیسز کا دیں, اور اس کے بعد پیرنٹس ریگولر ہو رہے ہیں. میں اکتوبر سے ان کو ریگولر کروا رہا ہوں, اور اکتوبر کی پینڈنگ کے لیے میں اسٹرگل کر رہا ہوں, اور اس میں ماشاءاللہ ہم نے اوور 150 کی تو فیسز خود جمع کرائیں گے. ایزی نہیں ہوتا وداؤٹ فنڈ. آئی ایم ناٹ ورکنگ ود دا فنڈ, آئی ڈونٹ جنریٹ ڈونیشنز, تو اپنے اینڈ کے اوپر ہی میں کر رہا ہوں, تو اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. غنی صاحب نے کیا رسپانس دیا؟ کیا نہیں, غنی صاحب کا رسپانس آپ کے سامنے ہی, وہ تو فوراً نکل جاتے ہیں. اور وہ اچھا, اس کے لیے میں نے ایک اور بڑا اچھا ایکسٹینڈ لیا. آئی وزٹڈ ایوری NGO, تقریباً NGO کو پوری دنیا سے فنڈ مل رہا, سیلانی والے ہیں, JDC والے ہیں. میں نے کہا کہ اب کووڈ ختم ہو گیا, آپ نے راشن کیا ہوا تھا, ریڈیوس 40% راشن میٹر,
टिल 3 months, 3 महीने के लिए आप अगर 20 करोड़ का राशन बांट रहे हैं ना, तो 12 करोड़ पे आ जाए। वो 8 करोड़ इन्हीं लोगों का ही पैसा है ना आप लोगों के पास, जो आज क्राइसिस में है। सही बात। यही लोगों ने आप लोगों को नाम बना के दिए, इन्हीं लोगों ने आज आपको खड़ा करके दिए, इन्हीं की वजह से आपका एनजीओ चल रहा है। आज इनको आप चाहिए तो अपना आप दें। मेजर मैटर है कि बाप और माँ बच्चे को घर बैठा नहीं सकते पढ़ाई के बगैर। आज अगले दिन एक फोन आता है, सामान बाहर निकाल रहे हैं जी, नोटिस दे रहे हैं कोर्ट के थ्रू कि जी घर खाली करें आपने 6 महीने से। तो इस वक्त एनजीओस के साथ मैं 3 चीजों पे बहुत कर रहा हूँ कि भाई अगर गवर्नमेंट, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं है, आप सारे एक पेज पे आ जाओ एनजीओ। आपको पूरी दुनिया से अरबों में फंड मिलता है, आप 3 महीने दे दो। एक आप जो छोटे मोटे घर हैं सर, जो रेनोवेशन मांगते हैं, किसी की दीवार है, किसी की छत है, किसी का फर्नीचर, सही बात है, उसके ऊपर आ जाओ। दूसरा आप फीसिस के ऊपर आ जाओ। तीसरा रेंट के ऊपर आ जाओ। आपने तो हेल्प करनी है ना। सही। अब आप मुफ्त राशन खिला के लोगों को बिल्कुल ही काम से जानना छुड़वा दो। सही। अब उनको काम पे भेजो और ये मसाइल हल करो ताकि उनके अंदर पावर आए और वो काम करे। पैसा इसी अवाम, इसी कौम, पूरी दुनिया के लोगों के पास है, उस पर ही खर्च होना चाहिए। महबूब साईं, तव्हां छा था चओ ओवरऑल इन सूरत हाल ते? सरकारी स्कूलनि में त शागिर्दनि जो मसलो आहे कोन, उते त अचनि था, उते फीस जो मसलो बि न आहे, पर ही का सूरत हाल आहे लॉकडाउन खां पोइ? गुरबत, बेरोज़गारी, विक महांगाई, ॿियो ॿार पढ़ाईअ खां महरूम आहिनि, फीसिस नथियूं माना पे थियनि, त इन ते छा तव्हांजी गिणती आहे तव्हांखे बि, या न बेफ़िक्र आहियो त पाण ई माशरो हलंदो पियो? न सर, असां बेफ़िक्र न आहियूं, छाकाणि त असां बि पंहिंजी का राय ॾियो। सोसाइटीअ में आहियूं ऐं जेको आहे ही जेके ॿार असांजे गवर्नमेंट इदारनि में पढ़नि था, उहे सभिनी सेक्टर्स मां बि हूंदा आहिनि। ग़रीबनि जा ॿार बि हूंदा आहिनि, मिडिल क्लास जा ॿार बि हूंदा आहिनि, अमीरनि जा ॿार बि हूंदा आहिनि। ऐं ज़ाहिर आहे कोविड-19 जे करे इलाही असरु थियो आहे, इकनॉमिकल सोसाइटी ते इलाही ड्रॉबैक्स आया आहिनि। पर हाणे जीअं जीअं 15 सेप्टेम्बर खां तइलीमी इदारा खुलिया आहिनि ऐं त अलाह जी महिरबानी सां स्लो आहिस्ता आहिस्ता इहे मसइला हल थींदा वेंदा। ऐं असांजे गवर्नमेंट जे तइलीमी इदारनि में इहो असां हाणे महसूसु कयो आहे त काफ़ी उहे माण्हू जंहिंजा ॿार प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़नि पिया, उतां उहे TC कराए असांजे गवर्नमेंट कॉलेजिस में अचनि पिया, गवर्नमेंट स्कूल्स में अचनि पिया। हींअर बि ताज़ो गुज़िरियल 15 तारीख़ खां वठी मूं वटि 10-12 पेरेंट्स अहिड़ा आया जेके प्राइवेट वॾनि कॉलेजनि में उन्हनि जा ॿार पढ़नि पिया ऐं उहे मुंहिंजे सरकारी कॉलेज में मूंखे चवंदा असांखे TC ॾियो। त मूं पुछियोमानि त साईं तव्हां छो प्राइवेट मां हेॾां पिया अचो, ही सरकारी त चईं सर असां तजुर्बो कयो, हाणे असांखे ख़बर पई त सरकारी कॉलेजनि में तइलीम तमामु बहितरीनु आहे। ऐं अलाह जी महिरबानी सां मुंहिंजे कॉलेज में ऐं ॿियनि सरकारी इदारनि में बि, पर आउं स्पेशली पंहिंजे गवर्नमेंट बॉइज़ डिग्री कॉलेज कासमा जे हवाले सां चवंदुसि त असां वटि तमामु सुठी आला फैकल्टी आहे ऐं उहे पंहिंजे यूनिवर्सिटी जा पोजीशन होल्डर्स आहिनि ऐं उन्हनि जी तमामु बहितरीनु क़ाबिलियत आहे। क्लास उहे रेगुलरली वठनि था, इन करे असांजे कॉलेज जे ॿारनि जी पोजीशन बि अचे पई ऐं दाख़िला जी एनरोलमेंट बि तमामु वधी वई आहे। ऐं असां ख़ुदि फर्नीचर जे हवाले सां परेशान थींदा आहियूं, पर असां पोइ गॾिजी सॼी उन्हनि सभिनी शयुनि खे हल कंदा आहियूं। मूंखे ॿुधायो, मूंखे इहो सवाल विच में अची वियो आहे। जी सर। त सरकारी स्कूलनि में सदाईं फर्नीचर जो मसइलो छो हूंदो आहे? हाँ सर, फर्नीचर जो मसइलो जॾहिं बि कुझु बि थिए त सरकारी स्कूल में एहतिजाज बि फर्नीचर जे मामले ते। हाँ सर, इन वरी थोरा टेक्निकल इशूज़ इहे हूंदा आहिनि त गवर्नमेंट फर्नीचर माना सेंट्रल तरीक़े सां परचेज़ कंदी आहे, पोइ स्कूलनि खे वरी कॉलेजनि खे उहो माना डिलीवरी थींदी आहे। फर्नीचर हूंदो आहे मौजूदु, जल्दी में ॻरी वञे थो, ॻरी वेंदो आहे, वरी ख़राबु थी वेंदो आहे, रिपेयर न थींदो आहे। पर हाणे अलाह जी महिरबानी सां असां जेके कॉलेजनि खे संभालियूं पिया त असां छा था करियूं, जो पंहिंजी लेवल ते फर्नीचर खे अरेंज करे था वठूं। कुझु दोस्त पाण में मिली, छो जो तइलीमी इदारो आहे, असांजो इदारो आहे, असांखे ओन करणु घुरिजे। त जेकॾहिं मिसाल तौर 50-60 ॿारनि जो जेके डेस्कूं खुटंदियूं, एनरोलमेंट वधे थी, त असां सभु दोस्त पाण में मिली करे उहो फर्नीचर अरेंज करे वठंदा आहियूं। सरकार ॾे असीं कोन ॾिसंदा आहियूं त हाणे 2 सालनि खां पोइ परचेज़ थिए, पंहिंजी लेवल ते असां उन खोट खे पूरो करे छॾंदा आहियूं त ॿार जो तइलीमी नुक़सानु न थिए। छो जो असां चाहींदा आहियूं त ॿार खे वधि खां वधि फ़ाइदो मिले ऐं ॿार जो तइलीमी नुक़सानु न
थिए छो तइलीम तमामु घणी अहमियत आहे सही सही छो जो मज़दूर जो ॿारु ग़रीब जो ॿारु जेकॾहिं पढ़ी पियो त हू मुआशिरे में हिकिड़े सुठे मुक़ाम ते वेंदो त उन्हनि जा नस्ल सुधरी वेंदा सही सही ऐं ख़ुदि हिकिड़े ग़रीब पोरियत जो ॿारु आहियां ऐं मुंहिंजे वालिद साहब बि मूंखे पढ़ायो ऐं असां पंहिंजी महिनत कई ऐं मेरिट ते खे रखियोसीं ऐं मूं पंहिंजे यूनिवर्सिटीअ जे दौर में 85 में MSc में एनालिटिकल केमिस्ट्री में पोजीशन खई सेकंड पोजीशन ऐं सुठनि उस्तादनि खां पढ़ियोसीं डॉक्टर खावड़ यार मोहम्मद खावड़ जेको हींअर वॾो साइंटिस्ट आहे उहो असांजो उस्तादु रहियो ऐं असां जेको आहे इन करे चाहियूं था त ग़रीब सभु ॿार पढ़नि त हू मुआशिरे में सुठे साईं अब्दुल रज़ाक सुमर साहिब जीअं साईं पंहिंजे दौर जी ॻाल्हि करे पियो असांजो उस्तादु खावड़ साहिबु जेको साइंटिस्ट बि आहे ऐं असां ॾाढी सुठी तालीम पढ़ाईसीं असां माना ॾाढा ख़ुशनसीब आहियूं हाणे को दौर ऐं अॻिलो दौर थोरो कंपेयर जे करे कयूं था त अॻे दौर जा माण्हू चवंदा त असांजी तालीम ॾाढी भली हुई उस्ताद ॾाढा भला हुया हाणे वारा उस्ताद भला न आहिनि तालीम सुठी न आहे छा चवंदो न साईं ईअं न आहे ऐं जॾहिं बि माण्हू मिलंदा आहिनि न पुराणे जुग जा त ॻाल्हि इहा कंदा साईं असांजो दौर साईं उस्ताद बि भला हुया तालीम बि भली हुई हा असल में छा आहे जो हर इंसान जूं पंहिंजूं पंहिंजूं यादूं आहिनि जेको जीअं जीअं वॾो थिए थो सर्वाइव करे थो ऐं उन सां उन जूं सुठियूं सुठियूं यादूं यादगार आहिनि सही सही त हाणे हर माण्हू चए थो त जेके जेके मुंहिंजूं यादूं आहिनि उहे लाजवाब उहे सभिनी खां भलियूं छो त पोइ त हुन ॾिठियूं कोन अॻियूं वञा हुन ॾिठियूं कोन्हनि तंहिंजे करे हर उहो दौरु भलो आहे जिथे तव्हां पॉज़िटिव रहिया आहियो अच्छा अच्छा जेके बि माण्हू चवनि था असांजी यादूं भलियूं त यादि रखे छॾियो त उहे माण्हू कॾहिं बि नेगेटिव न आहिनि रहिया अच्छा अच्छा उहे पेरनि खां वठी मथे ताईं पॉज़िटिव रहिया सही 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 छो त यादूं उन्हनि सां वाबस्ता हुजनि जेके सचा ऐं ख़रा माण्हू हूंदा सही सही छो त उन्हनि खे उहे दोस्त उहे उस्ताद ख़राबु न हूंदो आहे उस्ताद सख़्तु ज़रूरु हूंदो आहे कुझु ॿार असां जेके हुआसीं उस्ताद खे जेके सख़्तु उस्ताद असां उनखे लाइक कंदा हुआसीं अच्छा छो त असां जॾहिं घर वियासीं मां पंहिंजे भाउ खे ॿुधायो यार उस्ताद चए थो बाबा जेतिरो उस्ताद कड़क हूंदो त ओतिरो तालीम सख़्तु पिराईंदी सही सही उस्ताद ढरो हूंदो कुझु शागिर्द उस्ताद ढरो हुजे त असांखे कुझु न चइबो उहे तालीम न पिराए सघियो हा जेके उस्ताद माना पीरियड वठनि पंहिंजो पंहिंजो कमु कयो पंहिंजो कमु कयो पढ़ायूं कोन था पढ़ायूं कोन हा हाणे जिन जिन बि उस्ताद जेके सुरीला शागिर्द रहिया ऐं सुरीला उस्ताद रहिया उन्हनि सां उहे यादूं वाबस्ता सही 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 ऐं तालीम तव्हां ॾिसो न दुनिया जे कंहिं बि दौर में ख़राबु न आहे रही को बि उस्ताद न चाहींदो त को मुंहिंजो ॿारु जेको आहे सो नाकामी थिए हाणे हालत इहा आहे त असां मां 2005 में हिकिड़ो छोकिरो मूंखां पास आउट करे वियो इन जो जेको आहे ज़िक्र ख़ैर पाण ब्रेक खां पोइ कयूं हा बहितर आहे त इहा कहाणी मूंखे ड्रिगी लॻे थी थोरी हा नंढड़ी साई वठूं था मोटी अचूं था ऐं तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे अॼु तव्हां बि असांजी गुफ़्तगू में भली शरीक थियो तव्हांखे तालीमी गुफ़्तगूअ में नींढ ॾियूं था कोठ ॾियूं था शरीक थियण जे लाइ टेलीफोन तव्हां करे सघो था नंढड़ी साई वठूं था जल्दी मोटी अचूं था ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध सलाम सलाम जी वेलकम तव्हांखे भलीकार चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में अॼु तालीमी गुफ़्तगू आहे ऐं अब्दुल रज़ाक सुमरो साहिबु प्रोफेसर महबूब सुमरो साहिबु ऐं केस मंसूर शेख साहिबु असांजा महिमान आहिनि सो कचहरी जितां छॾीसीं पाण रिवायतनि मूजिबि उतां ई ॻंढियूं था कचहरीअ खे साईं रज़ाक साहिबु तव्हां ॻाल्हि पिया कयो त शागिर्द हुयो मूं वटि का कम जी ॻाल्हि हुई लॻे थो उहा पूरी कयूं त पोइ अॻिते वधूं हा न बहितर ॻाल्हियूं त जेके बि थींदियूं त हमेशह कम जूं थींदियूं ऐं उन ॻाल्हियुनि मां सिखणु घुरिजे बिल्कुलु तजुर्बा आहिनि लाइफ जा हा सही त उहो जेको शागिर्द जेको असां वटि पढ़ियो त माना सम्झो त फस्ट ईयर में ई माना हाई क्लास जो बदमाश हो अच्छा जॾहिं आयो त अच्छा असां हुन साई खे सम्झी मां चयो हे त तमामु जेको आहे सो यूनिवर्सिटी में बेड़ा शागिर्द कोन हुजे हितां स्टार्ट कयो आहे पोइ आहिस्ते आहिस्ते हुन साइकोलॉजी तौरु हुनखे ब्रीफ कयोसीं करे करे फस्ट ईयर हुनखे तालीम ते लाथोसीं ॿिया बि छोकिरा ख़राबु पियो करे पर आहिस्ते आहिस्ते उहो इंटर ताईं हो सेट थी वियो सही इंटर करे वियो जो ख़बर कोन पई वरी 2005 में हो 5 में निकिरी वियो 2015 में 10 सालनि खां पोइ कराची में हिते ई मां हुजां क्लिफ्टन ते त 4-5 छोकिरा हुजनि फुल सूट पाता पिया हुजनि रंग ई ॿिया थी विया अचे ईअं पहिरीं पई मुंहिंजा मां चवणु अलाए केरु आहे कराची जहिड़े शहर में मां सोचियां त डिॼी वियासीं दौर ख़राबु आहे मोबाइल फुरनि ऐं अॼुकल्ह सभु को मॉडल लॻो कोई फोरू त पहिरीं गणती मोबाइल ई हूंदी आहे सो पोइ वरी ॿुधाए मां चयो ख़ैर त आहे चईं मां तव्हांजो शागिर्दु आहियां अच्छा ऐं तव्हां असांखे सुठी राह ॾिनी अॼु मां पढ़ियुसि पोइ मां सिंध यूनिवर्सिटी मां IR में MSc कई उन खां पोइ महिनत कई एॾी त मां क़ाइद आज़म यूनिवर्सिटी मां करे आयुसि हाणे मां क़ाइद आज़म यूनिवर्सिटी में
उते लेक्चरार लॻो हा पर कचो अच्छा अच्छा तव्हांखे हिते ॾिठुमि अच्छा। ओचितो तव्हां सां मिलणु आयुसि हे सभु मुंहिंजा दोस्त आहिनि त इहा केॾी ख़ुशी थी थिए जेकॾहिं तव्हांजो को शागिर्दु मां वरी सम्झां मुंहिंजी ॻाल्हि लॻो तव्हां मिलण आया हुन शागिर्द जी ॻाल्हि लॻायो हा साईं त तव्हां बि असांजा पंहिंजा ई आहियो ऐं तव्हांजो असांखे ओतिरा ई प्यारा आहियो जेतिरा ॿिया आहिनि बड़ी मेहरबानी लख तोरा सो मंसूर शेख साहब स्किल्स की अगर बात करें तो प्राइवेट असातिज़ा क्या टीचिंग स्किल्स पे क्या राय देंगे आप बेहतर जो बात बेहतर से बेहतर की बात कर रहे हैं स्किल्स तो जो प्राइवेट है वो भी अब फिलिंग ही कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट है उसका आपको सिस्टम सारा सामने है और ये टोटली डिपेंड करता है प्रिंसिपल के ऊपर कि प्रिंसिपल कितना विलिंग है कि उसने क्या गोल लिया हुआ है कि मैंने अच्छे रिजल्ट्स निकालने हैं सही सही अच्छे रिजल्ट्स का गोल है। अब जो प्राइवेट वालों का तो एक गोल ये है कि कमाना है, उनका बिजनेस है, उनका एजुकेशन का नहीं है, तो हर तरीके से लेंगे, यूनिफॉर्म से लेंगे कुछ। तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ये और कॉलेजेस हैं जितने हैं ये बेसिकली ये स्पेंड करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, प्राइवेट अपने ऊपर स्पेंड करता है। तो इनके रिजल्ट्स एज कम्पेयर टू अगर आप प्राइवेट देखें जैसे आपको प्रिंसिपल साहब ने बताया और इनके आप कॉलेज के रिजल्ट्स देखें तो आप फील करेंगे कि जी गवर्नमेंट स्कूल एक नाम बना दीजिए गवर्नमेंट कॉलेजेस स्कूल्स बड़ा लो लेवल होता है, लो स्टैंडर्ड, लेकिन उनका आप रिजल्ट्स देखें दे बीट एवरी कॉलेज जो प्राइवेट हैं, एवरी स्कूल को बीट करते हैं। बस थोड़ा सा फर्नीचर और जो थोड़ा बिल्डिंग के इश्यूज होते हैं क्योंकि इनको प्रॉपर अप्रूवल लेनी होती है गवर्नमेंट से। एक कॉलर हमारे साथ हैं, अगर इजाजत हो तो ले ले, गुफ्तगू में शामिल होना चाह रहे हैं वो भी। अहमद अली साबिर चांडियो साहिब असां गॾु आहे, तालीम सां उहो दिलचस्पी रखे थो। अस्सलाम वालेकुम साईं। बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम साईं। स्टूडियो ताईं आवाज़ पहुचाइजो महिरबानी करे। हा हा लख थोरा। हेलो हा साईं, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम साईं, छा चवंदो साईं? साईं अर्ज़ु इहा त तालीम जी तबाही उन जा कारण उनजे हल ते कुझु महिरबानी करे मुअज़्ज़िज़ दोस्तनि खे चओ हा त तालीम जी तबाही उन जा कारण उन जो हल ते थोरो ही जेको असां वटि जेके शोशा वारी जेके स्कूल खुलनि था, असां वटि जेके उन हाणे मूंखे को दावत मिली वॾे स्कूल में माण्हुनि खे चुमनि था मिर्ज़ा कलीज बेग पैदा करे कोन सघिया आहियो, तव्हां अलामा आहे काज़ी पैदा करे कोन सघिया आहियो, तव्हां जेका असांजे साईं जन ॻाल्हि कई ख्वावड़ साहिब जी, ख्वावड़ साहिब मुंहिंजे ॻोठ जो माण्हू आहे, उहे इंटेलेक्चुअल माण्हू उहे अॼुकल्ह पैदा छो नथा थियनि। असां वटि इन तालीम जो फुक़दान, तालीम जी तबाही उन जा कारण इन्हनि ते थोरो महिरबानी करे थोरो वज़ाहत कयो त महिरबानी। सही 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 सही, थैंक यू सर, थैंक यू सर, वॾी महिरबानी लख थोरा। अॼु में दिलि ख़ुशि थी आहे त तालीम जी तबाही चए असां वटि फर्नीचर जेको आहे न गवर्नमेंट जेके बि इदारा आहिनि उन वटि फर्नीचर जेको भॼी थो पए उनखे डेड स्टॉक में लिखी था छॾनि ऐं उनखे जेका आहे सा वरी ॿीहर कोन था ठाहिनि, प्राइवेट वारा ठहिराइनि था, उहो ठहिराइनि ई कोन था, स्कूल किरनि था, स्कूल में मेंटेनेंस कोन थी थिए। सही सही। ऐं निसाब जे बारे में त मूंखे वॾा तहफ़ुज़ात आहिनि त तव्हां ॾिसो त निसाब में केॾियूं ग़लतियूं आहिनि, केॾियूं चुकूं आहिनि, केॾियूं इनखे घटि में घटि के मुहक़िक़ दानश्वर दानशामोस आहिनि उन्हनि खे ॾियो त निसाब उन्हनि खां जोड़ायो। सही 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 था चओ साईं, सही ऐं आहे। हिते तव्हां दोस्तनि खे घुरायो था, तव्हांजी महिरबानी। अॼु मुअज़्ज़िज़ दोस्त वेठा आहिनि, दिलि खोले थो ॻाल्हायां त असांखे अहिड़ा दोस्त आणियो उन्हनि खे सजेशन जेके ॾियनि उहे पंहिंजूं यादियूं घटि ऐं सजेशन वधीक ॾियनि त असांजी तालीम खे कीअं बचाइणो आहे। सिंधी तालीम तबाह थी वई आहे। सही था चओ साईं, सही था चओ, सही था। वॾी 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 महिरबानी साईं, ॻाल्हि पंहिंजी जॻह ते सही आहे साईं। मां बि हिकिड़े प्राइवेट कॉलेज में पर प्राइवेट स्कूल में ॿार दाख़िल कराइण वियुसि त पोइ हिकिड़ो बहस थियो प्रिंसिपल न, पोइ इहा सूरत ख़तीअ ते बहस थियो थोरो ईअं जीअं साईं चयो त का ॻाल्हि माना तालीम तबाह आहे त पोइ बदकिस्मतीअ सां मूंखे हिते ज़िक्र करिणो पए त उतां जे प्रिंसिपल खे वण लिखणु न पियो अचे सिंधीअ में, वण कीअं लिखिजनि, चईं असां वण पढ़ियो ई न आहे। मां चयो वण भला फसल त ॾिठो अथव न, कप त ॾिठी अथव न, वण भला लिखिबो कीअं आहे, वण ग़लति लिखी। मां चयो ईअं लिखिबो ई न आहे, पोइ तव्हां हाणे स्कूल में मां जो पंहिंजो शागिर्दु पंहिंजो ॿारु दाख़िल करायां त उहो छा पढ़ंदो बाक़ी। सो ॻाल्हि इहा आहे त जदीद निसाब बि अचणु घुरिजे ऐं उस्तादनि जी स्किल्स खे बि थोरो बहितर करण जी ज़रूरत आहे। उस्ताद जेकी ख़ासि तौर ते माज़रत सां ये बहुत कहा जाता है अक्सर कि भाई सरकारी जो असातिज़ा हैं या सरकारी जो भी इदारे हैं वो थोड़ा सा लेजी वो होते हैं, लेकिन प्राइवेट जो है वो थोड़े से चुस्त होते हैं और बड़ी तैयारी के साथ अपना काम करते हैं।
असल में ना सर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स भी जितने हैं, उनको बाउंड कर देना चाहिए कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स में उनके बच्चे पढ़े, गवर्नमेंट के लिए आ रहे हैं ना, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़े, स्टैंडर्ड भी हाई हो जाएगा, ये लोग भी अलर्ट हो जाएंगे। सरदार शाह साहब ने अपनी बेटी को एडमिशन करवाया था, बिल्कुल, ये एक एग्जाम्पल है। इसको रूल बना दिया जाए, लॉ पास किया जाए, तो आप देखें, आप अपना पास देख लें कि गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस से ही पढ़ के लोग प्राइम मिनिस्टर बने हुए, प्रेसिडेंट बने थे, लीडर्स बने हैं, मुल्क कैसे बना। तो ये सारी चीजें आप देखें तो सिर्फ स्टैंडर्ड आपका हाई उसी वक्त हो सकता है। हॉस्पिटल्स में भी देख लें आप, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही गवर्नमेंट सर्वेंट्स का इलाज हो, बात तो गवर्नमेंट स्कूल के और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ाते। अच्छा मंसूर भाई, ये मैं बात देख रहा हूँ कि स्कूल्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब जैसे ना चन्ने का कोई ठेला लगाया कोई किसी ने, तो इस तरह से हर मतलब मोड़ पे स्कूल है, हर गली में स्कूल है, इतने स्कूल प्राइवेट हो गए, कहाँ पर बंदा जाएगा? बेसिकली ना सर बिजनेस बन गया ना, प्राइवेट स्कूल का तो बिजनेस है, गवर्नमेंट स्कूल के एजुकेट करते हैं, एजुकेशन देते हैं, प्राइवेट स्कूल का तो एक अर्निंग हो गया ना। जैसे आप कोई भी एक बिजनेस कर रहे हैं तो ये वो एज ए बिजनेस ले रहे हैं, और बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी है, हम नॉर्मल भी नहीं है और कोई आम नहीं है आप इजीली स्कूल खोल लें। और इवन जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, बाज़ टीचर्स को, बाज़ एजुकेटेड जो किड्स हैं जो पास होते हैं, उनको कोई और स्कोप नहीं मिल रहा तो वो स्कूल खोल लेते हैं 3-4 स्टूडेंट्स मिलके, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको फ्लरिश करते हैं। लेकिन सिस्टम उसी वक्त सही होगा कि जब मिनिस्टर्स के बच्चे आएंगे, जब ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ेंगे, कॉलेज, तो उनके वॉशरूम भी आपको अच्छे मिलेंगे, इनका फर्नीचर भी अच्छा मिलेगा, यही गवर्नमेंट स्कूल वाले अपनी क्लासेस एयर कंडीशन बनाएंगे, यही सारे जो आप कह रहे हैं कि थोड़े से लेजी होते हैं तो चुस्त होंगे। और लेजी होने का मैटर क्या है कि 50-60% स्टाफ जो हायर होता है गवर्नमेंट का, वो पॉलिटिशियंस के थ्रू सिफारिशों पे होता है। मतलब ये तो एक उसको यकीन ऊपर दहानी वाला ये भी होती है ना डांटते हुए भाई। सोचता है कि फलां साहब ने इसको रखवाया हुआ है, इसको डांटा तो मेरी रिपोर्ट ऊपर हो जाएगी, नहीं, वो खौफ उनके ऊपर से नहीं कभी जाएगा ना, वो जाता है। और ये बात भी है कि भाई क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा तबादला होगा किसी और स्कूल में, निकाल तो नहीं खौफ सकते। तो होता है ना सर तबादले का। लेकिन प्राइवेट स्कूल में ये होता है कि भाई निकाल देंगे नौकरी से, तो वो बड़ा मतलब वो मेहनती उस्ताद बनता है, पढ़ाता है सही तरीके से। सरकारी टीचर को पता है सही, सरकारी टीचर सोर्स ऑफ इनकम भी देखे ना सर, उसकी इनकम और एक गवर्नमेंट वाले की इनकम सही देखे। सही आहे असांजी ॻाल्हि। मां चवंदुसि त हे जेका असां वटि वॾेराशाही जेका आहे न, जेको माना कंहिंखे कुझु नथो मिले भर्ती करे स्कूल टीचर, कुझु नथो मिले भर्ती कर सिपाही, कुछ नथो मिले या जंहिंखे कुझु नथो अचे, भला छा थींदे हिनखे टीचर करे छॾियो। हाँ टीचर करे छॾियो, हो पढ़ियल हुनखे का शइ कान्हे, यार, हे ॿियो कुझु न कंदो। वतंदो घिटी में रुलंदो वतंदो, उनखे तव्हां टीचर करे छॾियो प्राइमरी, या उनखे पुलिस में सिपाही करे छॾियो। ये पोस्टूं असां वटि आहिनि। बिल्कुल सही। हाणे जेको आहे सो असांजे हेठि जेको सिपाही ॾिसंदो, उहो तक़रीबन जेको पुलिस आहे उहा जेका सिपाही खां वठी जेके एस आहे, इहे क्राइम जा माण्हू आहिनि, इहे क्रिमिनल में क्राइम में ख़ुदि इन्वॉल्व आहिनि, छो त इनखे ॼाण त आहे ई कोन, इल्मु आहे कोन, या वरी ईअं खणी वर्दी पाए पाण पहिरियां उबाश रहिया हाँ। ये घुमंदा बिल्कुलु। वतन घण पुलिस में आवा। ऐं होॾे बि आहे जेको मथे जेका असांजी तालीम आहे कॉलेज वारी 17 ग्रेड वारी, उते ई न आहे, उते कमीशन आहे, उते उहो ई माण्हू पास थिए थो जेको कमीशन होल्डर आहे, जेको यूनिवर्सिटी मां पोजीशन होल्डर आहे, उहो नथो निकिरी सघे चाहे कुझु बि करे। हो जेकॾहिं पोजीशन पढ़ियल ई न आहे, यूनिवर्सिटी में MSc आहे कोन, ऐं भुगड़ा ॾेई ॾींदसि कोन हुते, यूनिवर्सिटी ईअं पास कोन कंदसि। जेकर यूनिवर्सिटी हुनखे ईअं पास करे छॾियो त जेको कमीशन इम्तिहान कढंदी उहो पास करे कोन सघंदो, हुनखे पेपर ॾिसण ताईं हुनजो दिमाग़ फिरींदो त छा लिखियल आहे। सही। पर जेका तालीम जेको असां जेको बुनियाद जितो आहे प्राइमरी, उते फुक़दान वॾो आहे। सही सही। असांखे प्राइमरी तालीम जेको आहे सो उतो असांखे बुनियाद करणु घुरिजे। ऐं कमीशन ऐं जेको प्राइमरी टीचर आहे न, उनखे बि जेकॾहिं तव्हां 17 ग्रेड ॾियो, प्राइमरी टीचर खे 17 ग्रेड ऐं कमीशन खां इम्तिहान वठे, त मां चवां थो ईंदड़ 5-8 सालनि में तव्हांजो जेको हेठियों जेको बुनियाद आहे उहो तव्हां थोरी यूरोप सां था टकर खाओ। सही सही सही। हाणे पोइ वधीक हाणे हुकूमत हिते पाण जेको आहे गुफ़्तगूअ में थोरो ईअं माना ट्विस्ट आणियूं, को कलाम तव्हांखे ॿुधायूं। सुबुह सुबुह तव्हां असांजा मुज़िद महिमान बि आया आहियो, सो उस्ताद मोहरम साईं ॾाढो सुठो कलाम बि तयारु कयो आहे, तव्हांजी इजाज़त आहे त ॿुधूं। बिल्कुलु साईं, साईं वाह कजो मोहरम साईं। ज़रूरु ॿुधंदासीं। रोज़ ककरन सां गॾिजी घुमां थो। उस्ताद बुखारी छा थो चए? रोज़ ककरन सां गॾिजी घुमां थो, पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो।
ककरनि सां गॾिजी घुमां थो, रोज़ ककरनि सां गॾिजी घुमां थो, पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो, है पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो। सुबुह सांझी शफ़क़ खे छुहां थो, सुबुह सांझी शफ़क़ खे छुहां थो, पंहिंजे ॻाढ़नि गिलनि खां पुछो, रोज़ ककरनि सां गॾिजी घुमां थो, पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो, है पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो। सुबुह सांझी उफ़क़ खे छुहां थो, सुबुह सांझी उफ़क़ खे छुहां थो, पंहिंजे ॻाढ़नि गिलनि खां पुछो, रोज़ ककरनि सां गॾिजी घुमां थो, पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो, है पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो। खिलंदे खिलंदे छॾियो था खिंडेड़े, मां बि थकिजां नथो मेड़े मेड़े, खिलंदे खिलंदे छॾियो था खिंडेड़े, मां बि थकिजां नथो मेड़े मेड़े, रोज़ मोतियुनि सां झोलियूं भरियां थो, रोज़ मोतियुनि सां झोलियूं भरियां थो, पंहिंजे मोती ॾंदनि खां पुछो, है पंहिंजे मोती ॾंदनि खां पुछो। सुबुह सांझी उफ़क़ खे छुहां थो, सुबुह सांझी उफ़क़ खे छुहां थो, पंहिंजे ॻाढ़नि गिलनि खां पुछो, रोज़ ककरनि सां गॾिजी घुमां थो, पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो, है पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो। रात सियारे जी पोएं पहर जो, सीकड़ की पवे थो कहर जो, ओ रात सियारे जी, ओ रात सियारे जी पोएं पहर जो, सीकड़ की पवे थो कहर जो, रोज़ अमृत जा प्याला पियां थो, रोज़ अमृत जा प्याला पियां थो, चाह ॾींदड़ चपनि खां पुछो, है चाह ॾींदड़ चपनि खां पुछो। सुबुह सांझी उफ़क़ खे छुहां थो, सुबुह सांझी उफ़क़ खे छुहां थो, पंहिंजे ॻाढ़नि गिलनि खां पुछो, रोज़ ककरनि सां गॾिजी घुमां थो, पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो, है पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो, है पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो, है पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो।
वाह साईं वाह, पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो ऐं ब्रेक कीअं वठिबो आहे इहो वरी असां खां पुछो। नंढड़ी साई था वठूं, वञो केॾां बि न, असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी भलीकार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में ॾाढो सुठो कलाम ॿुधोसीं मोहरम नाज़ साहिब जे आवाज़ में उस्ताद बुखारी जो कलाम, ऐं दिलि ॿिए खाने में अची वई, असांखे मौज़ू ई विसरी विया पंहिंजा, असां वरी वलिया वियासीं महबूब जे देस में, पर मोटी था अचूं तऊं कम जी ॻाल्हि कयूं पाण। अॼु तालीमी गुफ़्तगू आहे, तालीमी कचहरी आहे, ऐं असां सां प्रोफेसर साईं महबूब सुमरो साहिब, अब्दुल रज़ाक सुमरो साहिब ऐं केस मंसूर शेख साहिब असां सां गॾु आहिनि। सो महबूब साईं, जीअं साईं ॻाल्हि कई त पीढ़ जेका आहे सा मज़बूत हुजणु घुरिजे। असां वटि प्राइमरी उस्ताद पढ़ाईअ में ढिला आहिनि या उनखे कुझु बि नथो अचे, उते भर्थियूं माना ईअं ख़ाली भर्थियूं ई आहिनि। सो इन पासे ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत आहे, बाक़ी मथी साइड ते ठीकु आहे, तव्हां छा चवंदो? साईं आउं सम्झां थो त हाणे जेको आहे इहो थोरो गवर्नमेंट इन पासे ॾे इलाही तवजो पई ॾे, ऐं 2014 खां वठी जेका बि हेठी लेवल ते भर्ती थिए पई उहा IBA सखर जे थ्रू थिए पई। ऐं इन में प्योरली ॿार मेरिट ते कॉम्पिटेंट ॿार अचनि पिया, ऐं तमामु उन में सख़्तु क़िस्म जा पैरामीटर्स रखिया विया आहिनि त 60 मार्कुनि ते ॿार पास थींदो, वरी उन मां बि यूनियन काउंसिल लेवल ते स्क्रूटनी थींदी, ऐं तमामु छंड छाण करे त हींअर 2014 खां पोइ IBA सखर जे थ्रू जेके बि JEST HST जेके बि टीचर आहिनि, IBA सखर जो प्रिंसिपल मुहतरम साईं हाणे लाॾाणो करे जी जी सो हाणे अलाए छा सूरत हाणे त ख़ैर हा, पर जेके उहा भर्ती आहे त आउं चवंदुसि उहे तमामु कॉम्पिटेंट हा कॉम्पिटेंट ॿार आया आहिनि। हींअर स्कूलनि में उन्हनि जे ॿारनि जे टीचरनि जे इंडक्शन जे करे इलाही फ़र्क़ु थी वियो आहे, इलाही फ़र्क़ु आहे, सुठा ॿार कॉम्पिटेंट ॿार आहिनि। ऐं हींअर जेको आहे न ॿार प्राइवेट मां निकिरी गवर्नमेंट सेक्टर में इन करे बि अचनि पिया जो प्राइवेट सेक्टर में स्किल कोन्हे टीचर वटि। अच्छा, छो जो प्राइवेट सेक्टर में हू छा कंदा आहिनि, मैट्रिक पास रखी छॾींदा आहिनि, घटि पघार ते 5000 6000 रुपए ते, सिर्फ़ु ॾंडो हूंदो आहे, हुन ते कम जो लोड हूंदो आहे, 6 पीरियड हूंदा आहिनि। गवर्नमेंट सेक्टर में स्किल्ड टीचर आहिनि। अच्छा, ऐं उहे BEd PTC CT ट्रेंड, ऐं उहे पंहिंजे पढ़ाईअ में तमामु सुठा ऐं सुठे नमूने सां हींअर अॼुकल्ह स्कूल हलनि पिया। ऐं सम्झां थो त हाणे इलाही तब्दीली पई अचे, ऐं साईं सईद गनी साहिबु तमामु घणो सुठो तवजो पियो ॾिए तइलीम ते, स्कूल कॉलेज बज़ाते ख़ुदि पाण पियो विज़िट करे। हींअर SOP जे हवाले सां मुंहिंजो कॉलेज हुन विज़िट कयो लास्ट वीक में, मुंहिंजे कॉलेज खे विज़िट करे ॾाढो ख़ुशि थियो हुन, छो त तव्हांजो कासमाबाद डिग्री कॉलेज आउं ॾिसी ऐं अहिड़ो डेकोरम ॾिसी, सफ़ाई, ॿारनि खे SOPs ते ॾिसी ॾाढो ख़ुशि थियो। असांखे त ख़बर ई न हुई, असां त पंहिंजे टाइम जा पाबंद साईं जेको आहे 9:40 असां बि जंहिं ज़माने में पढ़ियासीं त पोइ इंस्पेक्शन टीम ईंदी त पोइ वरी वॾा इतमाम असां क्लासनि में सफ़ाई सुथराई हूंदी हुई। जीअं मां क्लास पढ़ायां पियो त ॾिसां त साईं सईद गनी क्लास में मुड़ी माना एतिरी बि गुंजाइश न मिली जो चौकीदार पटे वारो तव्हांखे जे ॿुधाए सघे त साईं अची वियो आहे, माना जीअं साईं आयो त सिधो डायरेक्ट क्लासनि में हलियो, क्लास पंहिंजा हलनि पिया, इहा ख़ुशी थी हुनखे। भली सईद गनी साहिब वेठो आहे त हाणे भली किथे मिलेव त जनील तव्हां खां पुछिजो, कंहिंसां कोन मिलियो, साईं जी ऑफिस में किथे वियो, सिधो क्लास में, क्लास पंहिंजा हलनि पिया। के ऐं गाॾी बि अहिड़ी में आयो ॼण ईअं जी आम गाॾी न हूंदियूं आहिनि, ॿियनि माण्हुनि जूं सादियूं पंहिंजूं गाॾियूं किथे ॿियनि रखी आयो त जी ख़बर न पए। हा, इस कॉलेज में त ॿियूं सभु गाॾियूं शागिर्द बि गाॾियूं काए था, थियो त तव्हां सुञातो माशाल्लाह शख़्सियत आहे ऐं तमामु सुठो कमु पियो करे तालीमी हवाले सां। सही सही सही। ऐं साईं जी कारकर्दगी मां वॾो मुतासिर थियो। सही सही सही। ऐं साईं तमामु होशियारु उस्तादनि मां आहे ऐं टैलेंटेड प्रोफेसर्स मां आहे। सही सही। ऐं जेके तव्हां ॿुधंदा बहितरीन प्रिंसिपल जंहिं वक़्त में हुआ साईं उन्होंने हिकु आहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा केस भाई, ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा काम है, सिंध गवर्नमेंट का खास तौर पर, जो ध्यान देती है तो ध्यान देती है सही तरीके से, तो फिर वो तनकीद भी होती रहती है उन पर, लेकिन मेरे ख्याल से तालीम के मामले पे भी सईद गनी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या कोविड में CM साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया, तो इस हवाले से तो बात होगी होगी। लेकिन ये सिलसिला जैसे साईं ने कहा कि भाई ये जो सिलसिला है कि प्राइवेट स्कूल्स में जो तालीम होती है वो असातिज़ा की वो कम होती है, मेट्रिक बेस पे रख देते हैं या उनको ट्रेनिंग नहीं देते,
تو یہ کوئی سسٹم بنانا چاہیے کہ بھائی ٹریننگ ہونی چاہیے ان کی بھی, کیا کہیں گے؟ بیسیکلی جو پرائیویٹ میں ہی ہوتا ہے کہ انگلش دیکھتے ہیں کہ ٹیچر انگلش اگر بول رہا ہے وہ میٹرک پاس ہو, انگلش میں وہ پتہ نہیں صحیح بول رہا ہے, ماڈرن ہو, ویل ڈریسڈ ہو, یورپین ڈریسنگ کی ہو, تو اس کو ہائر کر لیتے ہیں پرسنالٹی دیکھ کے. دے ڈونٹ جسٹ ہائر آفٹر سیئنگ دا ایجوکیشن, جو بھی ہے ان کی ایجوکیشن نہیں دیکھتے. دوسرا دیکھیں جو ابھی سعید غنی صاحب اور جو بھی پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے, اس کی وجہ سے پرائیویٹ سکولز کے اوپر اور کالجز کے اوپر بہت پریشر ہے. آپ چلیں جائیں, آج خود وزٹ کریں کہ اسی طرح گورنمنٹ کا اگر ہر منسٹر اگر کرے گا ہر ڈپارٹمنٹ کا, تو اس ملک میں, اس شہر میں, اس پروونس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں کسی بھی پرائیویٹ سکول میں چلے جائیں, ہر چیز ایس او پی کو اسٹرکٹلی فالو کیا جا رہا ہے. ایون گیسٹ آر ناٹ الاؤڈ وداؤٹ ماسک, سینیٹائزر دیتے ہیں, آپ نے یوز کرنا, دین یو انٹر دیٹ. اسی طرح میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ جام صاحب ہیں ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں, ان کو یہ کہا تھا کہ آپ آٹو موبائلز اس سیکٹر کو دیکھیں, الیکٹرانک سیکٹر کو دیکھیں کہ کوئی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر رہا. ایجوکیشن کو جیسے کنٹرول کر لیا گیا, پرنسپل ٹیچرز کے اوپر بہت پریشر ہے, گورنمنٹ کا کہ دے آر چیکنگ, وہ اپنے آپ کی بھی کیئر کریں. اگر اسی طرح وہ بھی کریں, اب آج دیکھ لیں کہ کووڈ سے پہلے اور کووڈ سے بعد 10 سے 15 لاکھ روپے گاڑیوں پہ بیکار بڑھا دیے گئے ہیں. ایک ہی گاڑی کے اوپر گورنمنٹ نے ٹیکس بڑھایا, جبکہ انہوں نے ساری گاڑیوں کو بل کر دیا. اس میں اسٹیٹ بینک کے گورنر نے انٹرسٹ ریٹ کم کیا, اور شو رومز ان لوگوں نے خود ہی ریٹس بڑھا دیا. کہ جب انہوں نے دیکھا انٹرسٹ ریٹ کم ہے تو بہت سے لوگ لیز پہ جائیں گے. انہوں نے دیکھا کوئی اور ڈپارٹمنٹ اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہا کسی بھی سیکٹر میں, کسی بھی چیز میں. اگر آپ دیکھیں سندھ گورنمنٹ کام کرتی ہے, جو نیگیٹو امپیکٹ ان کے اگینسٹ ہے وہ صفائی کا ہے, روڈوں, کراچی سے ریلیٹڈ روڈوں کی ٹوٹ پھوٹ کا ہے. پانی آ گیا تو پورے پاکستان میں ہی تھا چلیں, لیکن جو اصل جو ہے صفائی کا ایشو اور یہ جو ایشوز ہیں نا, یہ ہیں جس کے سندھ گورنمنٹ کے اگینسٹ جاتی ہے بات. اور کراچی والے, اور مزے کی بات وہ وہاں سے ہی آتی ہے آواز جہاں سے ان کی ٹیم الیکٹ نہیں ہوئی ہوئی, اور جنہیں کام کرنا چاہیے وہ انہیں بلیم کرتے ہیں, کوئی نہیں کر رہا. میں ابھی یوسف گوٹ, سرجانی ٹاؤن, اورنگی میں جہاں جہاں میں کام کرتا رہا الحمدللہ, آپ بلیو کریں ڈیورنگ رین نو ایم این اے ایم پی اے کیم ایون فرام اینی پارٹی. اچھا, کسی نے کوئی چکر نہیں لگایا. اور پانی جانے کے بعد لوگوں نے ان کو آنے نہیں دیا. پانی کے وقت وہ آئے نہیں پانی کی وجہ سے, اور پانی جانے کے بعد لوگوں نے آنے کا فائدہ بھی نہیں, اور کوئی کام نہیں کر رہے. انہوں نے ڈفرینشیٹ کرنا ختم کر دیے بٹوین اینیمل اینڈ ہیومن. جو ان گوٹھوں کے ہیں, اورنگی کے ہیں, کچی آبادیوں کے ہیں, ان کو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے لیونگ اسٹینڈرڈ کا. گٹروں میں رہ رہے ہیں, ٹوٹی سڑکوں میں رہ رہے ہیں, اور اس کے لیے کوئی گورنمنٹ نے وسائل ہے نہیں تو غریب بندہ کہاں جائے. مسئلہ یہ سر وسائل کا صرف ایک ہی سولوشن ہے جس کے لیے میں بہت ورکنگ کر رہا ہوں. میں پی سی ایچ ایس فرنیچر مارکیٹ میں گیا, ان ساری مارکیٹس کے میں بھی لیٹرز بنا رہا ہوں, ان کو دے رہا ہوں. اویئرنیس دینی ہے ہم نے سر. پی سی ایچ ایس فرنیچر مارکیٹ کا آپ نے سنا ہوگا جی, اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. سن لیا تھا نا آپ نے, بڑا پانی آ گیا, ڈوب گیا اربوں کا. اربوں روپے کا نقصان والا اربپتی ہوگا نا. صحیح بات ہے. کیا یہ لوگ 10-15 لاکھ روپے لگا کے اپنی مارکیٹ ڈیولپ نہیں کر سکتے؟ صحیح بات ہے. کیا اٹھا نہیں سکتے؟ اب بیروت میں ابھی جو ہوا ہے, انہوں نے دیکھا گورنمنٹ نہیں کری, لوگوں نے خود ہی ملبے اٹھا دیے, اور جو سپیڈ سے انہوں نے اپنے کام کیے کسی اور نے نہیں کیے. صحیح. آپ ان کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں ہماری بزنس کمیونٹی والوں کی, سراج قاسم تیلی صاحب کی خاص طور پہ, کہ نہیں وہ ہو جائے وہ ہو جائے. سیالکوٹ میں کیا کوئی اور آیا ہوا ہے؟ صحیح بات ہے. آپ نے سیالکوٹ دیکھا, پاکستان کا سب سے خوبصورت شہر ہو گیا. اس بزنس کمیونٹی نے اپنے ایئرپورٹس بنا دیے, اپنی ایئر لائن لانچ ہو رہی ہیں. کیا یہ سائٹ ایسوسی ایشن والے اور کرنگی ایسوسی ایشن والے یہ لوگ خود نہیں کر سکتے؟ ہر چیز میں گورنمنٹ ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے اوپر بھی تو کرونا آیا نا. اگر آپ کے اوپر ہے تو ہر پورے دنیا میں کرونا ہے, کتنے سٹورز بند ہوئے ہیں. لیکن اس وقت جو ضرورت ہے نا سر, صحیح, بزنس کمیونٹی کے پاس بہت پیسہ ہے, وہ اپنی مارکیٹس کو ڈیولپ کر کے ایک آئیڈیل بنا سکتے ہیں. اور فرنیچر مارکیٹ چھوٹی سی مارکیٹ ہے, اس پہ 10 لاکھ روپے بھی لگا دیں گے, گٹر سسٹم بھی صحیح ہو جائے گا, روڈیں بھی صحیح ہو جائیں گی, راؤنڈ اباؤٹس بن جائیں گے, انٹرنس بن جائے گی, ہر سسٹم ہی اپنے ہاتھ میں لے. لیکن کرے کون, مسئلہ یہ نہیں کرتے, ڈیپینڈ اپون گورنمنٹ. صحیح. میں وہ صحیح تاں جو اسکول میں برائے 120 سے عمل تھے تو
त इहे जेके मास्क पाए अचनि था शागिर्द या सैनिटाइज़र वग़ैरह इहो ॿार कंहिं ते आहे, स्कूल इंतज़ामिया सरकार गवर्नमेंट ॾिए थी या इहो पाण था कनि ॿार ख़र्चु? असल में हीअं त कोरोना जे करे हर माण्हूअ में थोरी आगाही अची वई ऐं जेके ॿार असां वटि अचनि पिया उहे मास्क पाए पिया अचनि ऐं असां नोटिस बोर्ड ते वणी छॾियो त हर ॿार पंहिंजो मास्क रखे। तंहिं हूंदे बि मूं पंहिंजी लेवल ते 4-5 मार्केट मां मास्क जा दॿा घुराए रखी छॾिया त जेकॾहिं को अहिड़ो ॿार मास्क विसारे थो अचे नथो खणी अचे त असां हुनखे पंहिंजे लेवल ते क्लास में मास्क ॾेई छॾींदा आहियूं। अच्छा, बाक़ी सैनिटाइज़र रहियो त असां मार्केट मां होलसेल ते सैनिटाइज़र जूं बाटल्स आयूं आहिनि उहे घुराए छॾियूं आहिनि ऐं हेठि असां हिकिड़ो पियान रखी छॾियो आहे जंहिंखे स्प्रे बाटल में सैनिटाइज़र पियल आहे, जेको ॿार अचे थो हुनखे असां हथनि ते सैनिटाइज़ करे था छॾियूं। हू काॾे विया इहे कमर्शियल इदारा जेके हरू बींदा स्कूलनि में, हथ साफ़ कयो, साबुण खणी ईंदा, इहे सैनिटाइज़र खणी ईंदा, हिन मुंद में अचनि न? पब्लिसिटी वठी विया। हा, उहे त सदा ईंदा आहिनि स्कूलनि में, चवंदा आहिनि सफ़ाई मुहिम, हथ साफ़ कयो, साबुण पंहिंजा इहे उहे हिन मुंद में अची करे जेकॾहिं स्टॉल लॻाइनि। सम्झो बरसाती ॾेढर आहे, बस पोइ वरी गुम थी विया और कोई को पतो ही ना है। सही सही सही। कुछ कमर्शियल लोग आते हैं जो बगैर मतलब कोविड के पहले आते थे कि भाई ये साबुन है, इसकी एडवर्टाइज, भाई हाथ धो, मुहिम है, ये है वो है, तो वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहे, मैं पूछ रहा हूँ, तो वो पता नहीं कहाँ गए। तो इस वक्त उनको होना चाहिए, साबुन देने चाहिए और बाकायदगी से हैंड वॉश देने चाहिए और सैनिटाइजर देने चाहिए। कंपनीज पता नहीं कहाँ है, बिजनेस खत्म हो गए, सैलरीज रेंटल नहीं दे सके बहुत। मैं तो प्रिंसिपल साहब को कहूँगा कि इनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, इनकी पर्सनल नेम की भी, और जहाँ जहाँ ये भी जाते हैं एक अच्छी मेहनत से काम करते हैं। इस दफ़ा सर आप अपनी बिल्डिंग को अच्छा कर दें, फ्रंट डोर्स, क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट में जो इशू आ रहा है ना, वो कहते हैं ना ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात है। थोड़ी सी आपने तो इतनी अच्छी समझे कर दी है आपने कि आप समझे यू आर ऑन द टॉप जो कॉलेजेस में अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका नाम की वजह से आज आप प्रिंसिपल हैं। नाम ना होता, आपका काम ना होता तो सईद गनी वाली टीम आपको प्रिंसिपल ना कभी करती। और आप मेरिट पे आए माशाल्लाह। आप बिल्डिंग इंप्रूव करें सर, बाहर की दीवार, वॉशरूम्स का सिस्टम कर दें। आप इस दफा गवर्नमेंट से फंड ये लें, क्योंकि देखें आप भी ये काम करके जाएंगे ना तो आप वो प्राउडली फील करके जाएंगे कि वो एक प्रिंसिपल छोड़ के गया था तो उसने बिल्डिंग भी बना के दी है। सही सही। एजुकेशन में यू आर ऑन टॉप, मार्वलस, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके रिजल्ट्स, आपके सर, आपकी पूरी टीम क्लास है, ठीक है। आप सारी टीम वेल ड्रेस भी है प्राइवेट की तरह, ग्रूम्ड भी है प्राइवेट की तरह। बिल्डिंग इंप्रूव करा दें और सर ज्यादा से ज्यादा 10-20 लाख लगाना है। केस भाई कॉलर है हमारे साथ जी, तो वो शामिल कर लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, केर पिया ॻाल्हायो? मां ज़ोया ॻाल्हायां थी। हा ज़ोया, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? हा मां ठीकु आहियां। टीवी जो वॉल्यूम बि घटि कयो ऐं इन नंढड़े खे बि चुप करायो। ॿ कम कयो वञे। जी, छा चवणु चाहींदो? मां तव्हांखे गानो ॿुधाईंदमि। हा ॿुधायो ॿुधायो, वाह वाह कयो। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तो मुझको आजमाने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू, हंसी हम कम नहीं, तो मुझको आजमाने की कोशिश न कर। कंहिंजे लाइ था ॻायो गानो इहो? कंहिंजे लाइ आहे? इहो हिकु माण्हू ॿुधाया। हलो ठीकु आहे ठीकु आहे, वॾी महिरबानी, लख तोरा। ऐं वरम साईं हिन ते मनु सकरणी साहिब हिन धुन ते ॻायो, चांड्रो की रात में सव सिंगार करे। वाह कलाम हो साईं, पुराणा कलाम ॾाढा मज़ेदार हूंदा। सो बहरहाल साईं ॻाल्हि इहा आहे त कुझु न कुझु पाण बि माण्हू करे। साईं वारी सजेशन पंहिंजी जॻह ते सही आहे त वरी मिसाली किरदार त भाई हिकिड़ो प्रिंसिपल हुयो जंहिं माना हिकिड़ो मयारी कमु कयो, ऐं ॿियो न त भला हूअं बि सॼी दुनिया असांखे चूनो थी खणी वञे, बिल्डिंग खे पाण ई चूनो करे छॾियो। न सर, साईं सही चयो ऐं साईं जी जेका ॻाल्हि आहे उन ते मूं अॻु में खां ई अमल शुरू करे छॾियो आहे। ऐं जीअं ई लॉकडाउन ख़तमु थियो, स्कूल खुलिया, त मूं पंहिंजे कॉलेज में छाकाणि हिकिड़ो सरकारी स्वीपर हो, उहो थोरो सुस्त हो, बीमार हो, त मूं पंहिंजो प्राइवेट स्वीपर हायर करे छॾियो ऐं उन सां सॼे कॉलेज जी सफ़ाई, वॉशिंग वग़ैरह कराइणु शुरू करे छॾियमि। अहिड़े तरीक़े सां कॉलेज में रंग रोगन बि मूं ज़ाती तौर ते एफर्ट्स वठी ऐं मूं चयो भई सरकार एजुकेशन वर्क्स जो आउं इंतज़ारु कोन कंदासीं, उहे जेसि ताईं उन्हनि जा पीसियूं ठहनि टाइम लॻी थो वञे। हीउ इदारो मुंहिंजो आहे, तइलीमी इदारो आहे ऐं ॿार मुंहिंजा आहिनि,
ग़रीबनि जा ॿार आहिनि पब्लिक सेक्टर कॉलेजनि में ग़रीबनि जा ॿार पढ़ंदा मोस्टली आउं तव्हांखे ॿुधायां गॾे गाॾी हलाइण वारे जो ॿार रेड़ी हलाइण वारे जो ॿार ऐं अहिड़े तरीक़े सां ग़रीबनि जा ॿार आहिनि ऐं फ्री आहे तइलीम फ्री आहे असां वटि का फीस न आहे ॿार जी फ्री आहे त इन करे मूं चयो त भई जेकॾहिं असां ॿारनि खे सुठी तालीम ॾिनो सुठो मैट्रिक ताईं मुंहिंजे ख़्याल में फीस नथा इंटर ताईं सर प्राइमरी टू इंटर कॉलेज बची आहे इंटर ताईं माना फीस ई न आहे फीस ई न आहे वॾी हिकिड़ी ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे ॿारनि खे दिलचस्पी हुजणु घुरिजे ऐं बिल्कुलु ऐं वरी उन खां पोइ जेके टीचर ॼण उहे हाई क्लास जा जो उनखे लेक्चर ॾियनि माना बाक़ाइदा लेक्चर थियनि ऐं अहिड़े तरीक़े सां उन्हनि जा वरी साइंसी तजुर्बा में वरी तजुर्बा थियनि तजुर्बा कनि त इहो थोरो ॿार में चाह थो पैदा थिए त मुंहिंजो ज़ाती ख़्वाहिश आहे त अलाह ताला असांखे हिन मुक़ाम ते पहुचायो आहे असां ग़रीब महिनत करे मेरिट ते पहुताईंदासीं चवंदा ग़रीब जो ॿारु पढ़े त उहो सुठे माना लेवल ते अचे त उन जा नस्ल सुधरनि छो जो हिकिड़ो ॿारु सुधरियो त उनजी फैमिलियूं सुधरी थियूं वञनि छो जो उहो पंहिंजे ॿार खे पढ़ाईंदो अॻियां वरी उहे फैमिलियूं वधंदियूं त असांजी कोशिशि आहे त वधि खां वधि ॿार सुठे तरीक़े सां पढ़नि इम्तिहान ॾियनि कामयाबु थियनि ऐं त असांजी यादि जहिड़ी सम्झो नौकिरी त उहो ई आहे ड्यूटी त ॾिनी आहे अलाह साईं असांखे पर हिकिड़ी वरी इबादत उस्ताद उहो बि पेशो साईं माना भलो आहे बिल्कुलु सो अब्दुल रज़ाक साहब तव्हां सब्जेक्ट कहिड़ो पढ़ाईंदा आहियो हुते माशाल्लाह सर मां सिंधी पढ़ाईंदो आहियां माशाल्लाह सिंधी अदब में वाह वाह ज़बरदस्त एमए कई मां सिंधी में अच्छा अच्छा हा माशाल्लाह फॉर्म भरिया एमए अंग्रेजी में एमए सिंधी में फॉर्म त ॿई भरिया मूं पर लिस्ट अची वई पहिरीं सिंधी अच्छा त मूंखे चयो त इन में फॉर्म भरंदा दाख़िला कैंसिल थी वेंदई मां चयो मुंहिंजो पोयां अञा रहियल आहे चई पोयां न थींदई ऐं मूंखे ॾेॼारियो मां खणी हिन में दाख़िला वरिती सही सही वरी हफ़्ते खां पोइ ॾिसां हुन में बि अची वई अच्छा अच्छा पोइ चयो हाणे हिन में पई थिए हाणे छॾा वाला मां शहर वाला अठ वाला वटि सही 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 पर हे सवेरे सुठो हिकिड़े दोस्त सब्जेक्ट साबिर साहब कॉल कई ऐं ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त अॼुकल्ह स्कूल मां जेके सरकारी स्कूल आहिनि प्राइवेट जी ॻाल्हि नथा कयूं त उतां को माना अहिड़ो शागिर्द तयारु थी के मंज़िल ते नथो पहुचे जंहिंजो मिसाल ॾेई सघिजे त यार हीउ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ियो पुराणे ज़माने में जीअं ॿिया जेके वॾा वॾा माण्हू जेके अॼुकल्ह प्राइम मिनिस्टर CM या XYZ MNAs MPs आहिनि या तव्हां असां पढ़ियासीं हाणे को अहिड़ो ॿारु जेको कंहिं वॾे मक़ाम ते उहिदे ते हुजे तव्हांजे कॉलेज मां उहो आहे साईं हिन वक़्तु जेके बि यूनिवर्सिटियुनि में जेके बि उस्ताद पढ़ाइनि था माना साईं जीअं चयो त को आया काज़ी हुजे को साईं मिर्ज़ा कलीज बेग हुजे को बि अहिड़ो होशियारु को साइंटिस्ट पैदा थिए छो नथा थियनि माण्हू साईं बिल्कुलु आहिनि साइंटिस्ट आहिनि यूनिवर्सिटी में वॾा तजुर्बा थियनि था असांजा उस्ताद PhD करे आया आहिनि हिन वक़्तु जेके यूनिवर्सिटियुनि में उस्ताद पढ़ाइनि था उहे 90% उहे हिन सरकारी स्कूलनि जा पढ़ियल आहिनि अच्छा सरकारी स्कूलनि में त साईं तजुर्बा घटि थींदा आहिनि प्रैक्टिकल ईअं चवंदा आहिनि जमो करायो मार्कूं वठी छॾियो न सरकारी स्कूलनि जो जेको शागिर्द यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी जो रूल आहे त जेको यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन खणंदो यूनिवर्सिटी में सर्विस उनखे मिलंदी अच्छा हाणे जेकॾहिं हो डफर हुजे हा प्राइवेट खां वठी पहिरें जमायत खां वठी त यूनिवर्सिटी में लेक्चरार कीअं थिया 18 ग्रेड में अच्छा लाज़मी लाज़मी हुन जो बुनियादु पको हुननि सुठा उस्ताद मिलिया हुननि पढ़ियो पर उन सां गॾु गॾु उस्तादनि सां गॾु गॾु मां इहो चवंदुसि वालदेन जो वॾो हथु आहे पंहिंजे ॿार खां असली कोन था पुछनि त तूं स्कूल वञी छा पढ़े कहिड़ा सब्जेक्ट पढ़े उस्तादनि तोखे छा पढ़ायो असां वटि 4 लेटर शागिर्द खां वठंदा आहियूं लिफ़ाफ़ा त ॾेई वञे साईं वेठो आहे साईं पुराणे उस्ताद दौर में असां उहे 4 ई लिफ़ाफ़नि ते असां एड्रेसनि ते लेटर लिखंदा आहियूं पंहिंजे माउ पीउ खे त अॼु सॼो साल थी वियो आहे तव्हां पंहिंजे ॿार जी जांच वठण न आया महिरबानी करे कॉलेज अचो त सही साईं ब्रेक वठूं डायरेक्टर रिमू जी जांच वठे हा त ठीकु आहे सो नड़ी साईं वठूं मोदी बिल्कुलु बिल्कुलु सो नड़ी साईं जो वक़्तु आहे तालीमी गुफ़्तगू पंहिंजी जारी आहे तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था टेलीफोन करे सो ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध जी भलीकार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में ऐं बग़ैर कंहिं देर जे तव्हांखे हाणे ॿुधायूं था असां हिकिड़ो ख़ूबसूरत कलाम उस्ताद मुहर्रम नाज़ जो ख़ूबसूरत आवाज़ शामिलु कंदासीं मौज़ महिमाननि जी इजाज़त हूंदी साईं पोइ था कचहरी कयूं साईं बिल्कुलु अॼु तव्हां माना बादशाह सलाम तव्हां घुरायो न तव्हां पहिरियां माना रियाया इजाज़त वठंदी पोइ माना कमु थींदो साईं वाह वाह कयो साईं हाणे ही साईं जन वेठा उर्दू स्पीकिंग बि आहिनि नज़र हिकिड़ो वाह वाह साईं ॿोलियुनि जो ख़्यालु कयो साईं पंहिंजो रेशमा असांजी तमामु वॾी लीजेंड आर्टिस्ट आहे पाकिस्तान जी उन्हनि जो ॻायो उन खां पोइ लता मंगेशकर बि ॻायो उन्हनि खे जी जी सो उहो पेशे ख़िदमत आहे दूर से दिल के
लग के मर जा, क्या रखा है जीने में, अखियों को रहने दे, अपने अखियों को रहने दे, अखियों को रहने दे। नहीं वाह 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 नहीं वाह, करार अची वियो साईं, करार अची वियो। म्यूज़िक बि आहे लाज़मी आहे, भला ध्यान खे मटाए ॾे थोरो, माण्हू मसइलनि खां थोरो परे थी करे वांधकाईअ में कलाम बि ॿुधे माण्हू। सो वाह वाह साईं। अच्छा महबूब साईं, हाणे हिन भेरे ईअं थियो, हुकूमत ईअं कयो त शागिर्दनि खे प्रोमोट कयो वियो, जेकी इम्तिहान न वरिता विया ईअं ई पास थी विया। शागिर्द त वॾा ख़ुशि थिया त बाबा इम्तिहान बि न वरितो, पास बि थी वियासीं, पर हिन जो तालीम ते असरु न पवंदो, छो त हीअ पढ़िया बि कोन ऐं टेस्ट बि कोन, इम्तिहान बि कोन, वरी ॿिए अॻिले जेको आहे सो निसाबी किताबनि जी तयारी, सो ॾुखियो मरल आहे। छा चवणु चाहींदो त सही थियो इहो कमु? सर इहो असां ईअं सम्झूं था, पर सॼी दुनिया में ईअं थियो आहे, सिर्फ़ु पाकिस्तान में न थियो आहे। अमेरिका, जर्मनी, जिते किथे कोरोना जो जेको लॉकडाउन थियो त इन करे हुकूमतुनि सोचियो त बजाए ॿार जो साल अकेडमिक ईयर वञे त उन्हनि खे प्रीवियस रिज़ल्ट जे बेस ते प्रोमोट करे छॾिजे, पोइ वरी जेको आहे अॻियां वरी पढ़ंदा त इंशाअल्लाह ताला असां वरी इन्हनि टीचर एज़ अ टीचर असां इन्हनि शयुनि ते तवजो ॾियूं पिया। त हाणे ॿार साल खां पोइ वरी 8 महीननि 9 महीननि खां पोइ आयो आहे त क्लासनि में थोरो असां वरी उनखे रिफ्रेश बि करियूं पिया, रिव्यू बि करियूं पिया, पुठियनि ॻाल्हियुनि खे बि रिव्यू करियूं पिया, ऐं सभु उस्ताद बि ईअं ई कनि पिया। काफ़ी जॻहियुनि ते ॿार आस्ते आस्ते हाणे अप थियनि पिया इंशाअल्लाह ताला। त इहो ख़ैर तइलीमी नुक़सान त असीं खणी कोन चवंदासीं, पर थोरो ॿार जो अकेडमिक हल्को फुल्को नुक़सान थियो, पर ॿार महिनत कंदो त इंशाअल्लाह ताला कवर करे वेंदो। त आउं सम्झां थो त गवर्नमेंट सही फ़ैसिलो कयो, छो जो बजाए ॿार खे साॻी क्लास में रखनि हा त हिकिड़ो साल जो हुनजो उमिरि जो वॾो माना लॉस थिए हा। त हुकूमत WHO सॼी दुनिया खे ॾिसी करे ऐं पोइ इहो फ़ैसिलो कयो, ऐं इन सां ॿार जेको आहे इंशाअल्लाह ताला हुनजी एज बची वेंदी, बाक़ी थोरो घणियूं घटि वधायूं उन्हनि खे हू कवर करे वठंदो टीचर जी महिनत सां, पंहिंजी महिनत सां इंशाअल्लाह ताला। अच्छा केस भाई, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह तालीम पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या खिदमत है अवाम के लिए आपकी, क्या हो रहा है?
میں ذرا اس ٹاپک کو کمپلیٹ ہاں کر دیں اس کو. دیکھیں ایک پرنسپل صاحب سے آج ملا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہوئی, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے اور اب میں جاؤں گا ضرور. اور جو ہے دیکھیں میں این جی اوز کے لیے ایک میسج دینا چاہتا ہوں. صحیح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر این جی او دسترخوان دے رہا ہے اور غریب کو غریب سمجھ کے ہی دے رہا ہے. صحیح فٹ پاتھوں پہ گندی جگہوں کے اوپر چادریں ڈال دی جاتی ہیں. آپ نے دینا ہے تو آپ اپنے طریقے سے عزت کے ساتھ دو, غریب کو غریب سمجھ کے نہ دو, اس کو عزت دینے کے لیے آپ کھانا دے رہے ہو. اسی طرح ہی ہمارے گورنمنٹ اسکول کالجز کی پوزیشن ہے. اچھا صحیح. غریب اگر پڑھنے آ رہا ہے تو اس کو سٹینڈرڈ اپنے گھر والا ہی دو, سٹینڈرڈ اس کے لیے کام کرو. آپ اگر ایک غریب یہ نہ سوچیں غریب ہے بھائی یہ اس کو ایسے بیٹھ جائے گا جی وہ بینچ نہیں ہے نیچے بیٹھ جائے گا, یہ کانسیپٹ ختم کرے. غریب نے آگے بڑھنا کیسے ہے, اس نے کیسے آپ کے ذہن میں غربت ڈالی ہوئی ہے. پی این سویپر جو لیبر سٹاف ہے اس کو پراپر یونیفارم دے دو. 10,000 روپے میں یونیفارم بنتے ہیں سر, پرنٹڈ شرٹ 300 روپے کی بن جاتی ہے. دیر مسٹ بی ڈفرنس بٹوین ادر اینڈ یو. آپ آئے ہیں تو آپ کا دوسرے سے فرق ہونا چاہیے. یہ 10,000 یہ چھوٹے کام تو انسان اپنے آپ سے ہی ڈال کے کر لیتا ہے. سر یہ آئیڈیاز تو آپ اچھے دے رہے ہیں لیکن بڑی کرپشن ہوگی اس میں بھی, کچھ بھی نہیں ہوگا, سارے پیسے ہڑپ ہو جائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ویل ڈریسڈ لوگ بیٹھے ہیں کہ 10-20 ہزار روپے اپنی جیب سے لگا کے سٹاف کو کہیں تم نے پینٹ شرٹ شوز میں آنا. اس سے ہوگا کیا کہ جو وہ بچہ ایک اچھا سٹینڈرڈ دے کے جائے گا, ایک اچھے ویل ڈریسڈ چیزیں دے کے جائے گا, اچھی فرنش, تو وہ گھر کو بھی اپنے امپروو کرے گا, پیرنٹس کو ٹیچ کرے گا. ایک مزدور کا بچہ وہاں پہ جب دیکھے گا کہ گھر اس کا نہیں ہے لیکن وہ اس کو آرگنائز کرے گا. آپ ایجوکیٹ اس کو اسٹڈیز میں نا ایجوکیٹ اس کو دنیا میں رہنے کے لیے بھی کر رہے ہیں آپ. صحیح صحیح. دوسرا آپ کا سمجھیں گورنمنٹ کے پاس وسائل نہیں ہیں اور آپ آگے آپ ہیں سر, آپ نے دوسرے کی ایگزامپل نہیں دینی, وہ خراب کر گیا وہ یہ کر کے نہیں. یو سر آپ آ جائیں, آپ بزنس کمیونٹی کو بلائیں, انوائٹ کریں. آپ ان کو کیوں بلاتے ہیں جہاں سے آپ کو فیور نہیں ملتی. آپ کا سکول نہ بنا سر, پاکستان سے جو کرونا گیا انسانیت کی وجہ سے گیا, ان این جی اوز کی وجہ سے گیا, ان سوشل ویلفیئر جو لوگ کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے گیا. گورنمنٹ کا 10% شیئر ہے تو 90% ان این جی اوز کا ہے. آپ سیلانی کو دیکھ لیں, چھیپا کو دیکھ لیں, جے ڈی ایس کو دیکھ لیں, جے ڈی سی کو, سب کو دیکھ لیں, سارے برنی کو دیکھ لیں. جس کو آپ کریں گے ان لوگوں نے کام کیا. اپنے این جی او پورا پاکستان کو نہیں چلا سکتا, تھوڑی سی ہیلپ کر سکتا نا کہ وہ زندہ رہ جائیں, اسی لیے کر سکتا. تو میں آپ کو سر ضرور کہوں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت بخشی ہے, آج آپ ایسے بڑے چینل پہ بھی آئے ہیں تو آپ کی کوئی نو ہاؤ ہوگی تو انہوں نے آج آپ کو انوائٹ کیا, نہیں تو لوگ تو خود چاہتے ہیں آئیں اور انویٹیشن ان کو نہیں ملتا. یو آر دا پرسن ہو گاٹ دا انویٹیشن فرام دس چینل. آپ نے کچھ کرنا ہے ڈفرینٹ. آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے نا پوسٹ کے بعد تو کہتا ہے یار میرے پاس موقع تھا اور میں کیوں نہیں کر سکا. اس وقت اس کے بچے ادھر ادھر ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ اپنے پاسٹ کے اوپر افسوس کرتا ہے کہ مجھے عہدہ مل گیا, مجھے ایک ٹائم مل گیا, مجھے کام میں کر سکتا تھا, میں کیوں نہیں کیا. صحیح بات. وہ اس پچھتاوے میں مر جاتا ہے. بالکل. آپ لوور سٹاف کا بھی یونیفارم بنائیں سر, اور آپ کی کوئی ہے, اب آپ نے انویٹیشن دی ہے تو میں آؤں گا ضرور. جی سر بالکل. تو مجھے رکھیے گا اور میں دیکھوں گا وہاں کے لیے. بلکہ ساتھ چلیں گے, کس میں ساتھ چلیں گے. اچھا سر میں دادو گیا, دادو میں ہندو کمیونٹی نے ایک اسکول بنایا ہوا تھا, چھت ٹوٹی ہوئی. اچھا ادھر کوئی کانسیپٹ نہ لائٹ کا نہ فین کا. اچھا اچھا. ٹوٹا ہوا فرش, وہیں پہ فرش ٹوٹے ہوئے پہ بیٹھے ہوئے تھے بچے. 3 کمروں کا وہ تھا. میں گیا, میں نے کہا اچھا, میں نے انہی کو کہا کہ اب اس کو تم بناؤ, جو تمہاری کاسٹ آتی رہے گی مجھے بتا کر. انہوں نے فرش پورا بنایا, چھت بنائی, ان کو سولر لائٹس لے کے دی, ان کو فینس لے کے دیے, ان کو پلے ایریا بنا کے دیا. ان بچوں کے پاس جوتے نہیں تھے, پورا یونیفارم کر کے A to Z ان کو ہم نے اپ ڈیٹ کر دیا. ایون ہیئر ڈریسر نے ہیئر کٹنگ ان کی, گرومڈ کیا ان کو. اس کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے, 2 لاکھ روپے. پنکھے میں بھی بیٹھتے ہیں, لائٹ میں بھی بیٹھتے ہیں, ہینڈ پمپ بھی لگا دیا, پلے ایریا بھی بنا دیا. ایمانداری سے 2 لاکھ روپے لگے, بن گیا. اس کے بعد آپ بلیو نہیں کرتے, ان بچوں کو پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان بچوں کو کراچی میں انوائٹ کیا اور پرائیویٹ اسکول کے بچوں کے ساتھ ملوایا. ان کا کمپلیکس ختم ہو امیر غریب کا. ہمیں اسلام نے بڑا سکھایا, اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں. اور دیکھیں ٹیچروں کا, پروفیسر کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ ہم اس کی جتنی عزت کریں کم ہے. بالکل صحیح. لیکن بعض ٹیچرز انہوں نے اپنا رتبہ خراب کر دی, نہ کام کر کے اور کچھ بھی نہیں کر کے.
صحیح. गरीब को गरीब नहीं करना, बल्कि उसको आप आगे हो. अब आपकी किस्मत है कि आप गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हो, तो फिर अब आपने जिंदगी में इसका काम करके जाना है. बुलाएं बिजनेस कम्युनिटी, उस इलाके के अमीरों की लिस्ट निकालें, छोटे छोटे ओकेजन्स करें जी, 50 बंदों का, जी आप आज चीफ गेस्ट आ रहे हैं, यू शुड यूज योर माइंड इंस्टेड ऑफ क्रिटिसिज्म कि जी आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं. नहीं, अब आप इसको एक मॉडल बना सकते हैं, भले 500 से 800 आपकी वही लगेगा स्कूल इस पे थोड़ा सा लाख रुपए की ध्यान दें आप. बननी है, तो आपकी सारी कुर्सी आ जानी ईमानदारी और हक लाल से. सही सही. आपका पेंट की कितनी क्लासेस होंगी, क्या आ जाएगा, 1.5-2 लाख रुपए. ये कि आप 6 बिजनेसमैन इकट्ठे करके नहीं बुला सकते. आपका गोल होना चाहिए कि मैंने फुटपाथ पे गंदी जगह के ऊपर बैठा के गरीब को खाना नहीं खिलाना, मैंने उसको भी फोल्डिंग चेयर रख के खिलाऊंगा कि बेटा बैठ अब तू. मैं अभी परसों एक जगह के ऊपर चीफ गेस्ट था, उन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया छोटा सा. अच्छा. और उन्होंने एक जैसे वो भी एक दस्तरखान था, लेकिन दे मेड द प्लेस लाइक अ रेस्टोरेंट कि गरीब खाए तो रेस्पेक्ट के साथ खाए. सही सही. फिर एक अच्छा टीचर जो मुकाम हासिल करता है, जिसको रिटायरमेंट के बाद में मुकाम, वो अपने बच्चे जो उसके स्टूडेंट्स उस पर नजर रखता है. आज कौन फटे हुए जूते पहन के आया, आज किसके पास फटे हुए यूनिफॉर्म है, आज किसके पास किताबें नहीं है. ये टीचर इज्जत हासिल करता है. सही सही. और अल्लाह से कारोबार करो भाई. 100 रुपए लगाओगे, उस 1000 रुपए देने. सही सही. अल्लाह से कारोबार करके बच्चों को खुद देखें अपने टीचर, और आप टीचर भी कंट्रीब्यूट कर लें. कितने टीचर्स होंगे आपके कॉलेज में? 60 बेबी बसाल के तौर पे 200-200 रुपए आप दे दिया करें, ये गल्ला बना दें. और फिर देखें कि किस बच्चे की नहीं है, तो कौन गरीब का बच्चा नहीं स्टैंडर्ड में रहेगा, उसी स्टैंडर्ड से रहेगा जो एक मिनिस्टर का बच्चा होगा. मिनिस्टर के बच्चे ने क्या करना है, पैंट कमीज साफ पहन के आएगा ना, और क्या, जिस्म वही, आंखें वही, नाक वही, कान वही. आप टीचर्स भी एक फंड बना लें, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए महीना. आप बिलीव करें, मैं 1989 में कराची आया, मैं घर से अपने लड़के आया था, लेकिन मैं यहीं पे स्टडी की, यहीं पे बना, यहीं पे मैंने मुकाम हासिल किया. मेरी एक टीचर थी, एक दिन मैं रात के 4 बजे तक जॉब करता था और सुबह 8 बजे मैं पढ़ने जाता था. तो उन्होंने एक दिन देखा मैं सो रहा हूँ क्लास में, तो उन्होंने बुलाया मुझे. उन्होंने कहा, बेटा तुम, मैंने सुना तुम सुबह 4 बजे तक रेस्टोरेंट में जॉब करते हो, फिर पढ़ने आते हो, तो तुम ऐसा करो, तुमने शायद पिछले महीने की फीस नहीं जमा कराई, तो मैंने तुम्हारी तरफ से करा दी. मैंने कहा नहीं मैम, मुझे भी सैलरी मिलेगी, मैं दूंगा. मैंने दे दी उनको. लेकिन वो टीचर, उसके बाद उस इंस्टीट्यूट के बच्चों को मैं कभी फीसेस देता हूँ, कभी जॉब्स के लिए करता हूँ. और फिर ये मैंने काम किया कि जब मेरे लिए लोगों ने सोचा, तो मैं दूसरों के लिए क्यों ना सोचूं. सही बात है. सही तो बात. वो टीचर सारी जिंदगी जिंदा रहेगी सर. आज आप 500 अच्छे लफ्जों में याद कर रहे हैं उसको. सर आज ये कोरोना आया तो मैंने बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना खाना छोड़ दिया. मैंने कहा मैं अपने दोस्तों को बुला के 10-15 हज़ार रुपए का बिल करूंगा. अब 15 हज़ार रुपए में 5 खानदानों का नहीं करूंगा. छोड़ दें सर खाना बाहर का. 6 महीने दे दें इस कौम को, कौम खड़ी हो जाएगी. सही बात है. टीचर्स भी आ जाएं, हर स्कूल, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, स्कूल है, हर टीचर एक फंड दे. और किसी को भी तकलीफ है, वो सफेद पोश है सर. मेरे पास परसों एक खातून का फोन आया, 70 ईयर्स की, उनके बच्चों का फीस नहीं थी कॉलेज की, और वो बस रोती रही बोलती रही कि मियाँ की जॉब भी चलेगी, 70 ईयर्स में भी मर्द काम कर रहे होते, बाद के छोटे बच्चे हो जाते हैं. सही बात है. उसने मुझे फीस का भेजा, मैंने कहा नहीं मैं करूंगा. आप देखें, कहती है हम सफेद पोश है, हमारा नाम नहीं आना चाहिए. अब लोगों के अंदर ये भी तो है ना सर. हाँ बिल्कुल सही बात है. तो सर आप कुछ करें डिफरेंट कि कौन साईं मनाइए जी आगे भंडारे में मुझे नाराज़गी बलागर करें. और मुझे यकीन है कि आप करेंगे. साईं तमाम सुठियूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि. साईं ॻाल्हि माने कटाई कोन पियो, इंटरव्यू न पियो कयो, छो त इहो मोटिवेशनल ॻाल्हियूं आहिनि. ॻाल्हियूं असांखे मूंखे ॾाढियूं माना वणियूं ऐं दिलि वटां ॻाल्हियूं कई. ऐं साईं जेके ॻाल्हियूं कयूं हुन मां कुझु मूं शुरू करे छॾियूं आहिनि. सही सही. तव्हां शुरू करे छॾियो आहे त मां ब्रेक वठां हिकिड़ो. जी सर. पोइ वरी था शुरू कयूं. तो नंढड़ी साई वठूं था, वञो केॾा मन आथत ऐं उमेद ॾियण वारा माण्हू घटि हूंदा आहिनि. ऐं इन्हनि ॻाल्हियुनि ते अमल जेकॾहिं पाण कंदासीं त कामयाबु थी वेंदासीं. नंढड़ी साई वठूं था, हिन ॻाल्हि खे कंटिन्यू कयूं था. ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध. मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध. हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध. जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था. तइलीमी गुफ़्तगू हले पई ऐं केस मंसूर शेख साहिब तमामु घणा सुठा आइडियाज़ बि शेयर कया आहिनि. जेकॾहिं पाण पंहिंजो किरदारु अदा कयूं, पंहिंजे हिसे जो किरदारु अदा कयूं, त नालो पंहिंजो ई थींदो, अमर थींदो. ऐं वञण खां पोइ माण्हू सुठनि लफ़्ज़नि में यादि कंदा त को हुयो जेको हिन कॉलेज खे, हिन यूनिवर्सिटी खे, हिन इदारे खे ठाहे वियो. सो अक्सर माण्हू अची करे ड्राहे वेंदा आहिनि कम खे,
सो तव्हां ठाहिण जी कोशिशि कयो ऐं जेकी बि असांखे उस्ताद मोज़ ॾिसनि पिया हिन वक़्तु प्रोग्राम या जेकी बि मुख़्तलिफ़ इदारनि जा सरबराह ॾिसनि पिया पंहिंजो पंहिंजो जेकॾहिं पंहिंजे हिसे जो थोरो कमु कनि त बिल्कुलु ई इलाही सारी तब्दीली अची सघे थी ऐं हुन तब्दीली जी शुरूआत तव्हांखे पाण खां करणी पवंदी सो तइलीमी कचहरी बि जारी आहे असांजी पर अब्दुल रज़ाक साहिबु तव्हांजो भला इहो सफ़र किथे पहुतो अदाकारी बि वॾी कई तव्हां सो PTV वारे ज़माने में सिंध TV ते बि तव्हांजा ड्रामा हुया मुंहिंजे ख़्याल में सिंध TV ते हुया अच्छा पोइ हाणे ड्रामा करणु बंदि कया अथव या भला न ड्रामा करणु बंदि टाइम कोन था ॾेई सघूं अच्छा छा आहे जो ड्रामनि जी जेको शेड्यूल आहे उहो टाइट आहे ऐं ॾींहंनि जा ॾींहं जेको आहे सो हाणे हेॾे असांजे कॉलेज बि शुरू होॾे 8 ॾींहं ड्रामे जी रिकॉर्डिंग थी हले हिकिड़ो ॾींहुं हुजे त माण्हू कढी सघे थो पर हाणे हेॾे क्लास आहिनि ऐं होॾो हाणे लॉकडाउन हो त हिन में सभु सिधो केॾो बंदि आहे त कमु कोन हो भला कॉलेज बंदि आहे त हेॾो शुरू थियो हेॾे बि बंदि हो इहे शइ ॿई शयूं गॾु थियूं हलनि भला इहा अदाकारी जा जोहर कहिड़े साल खां ॾेखारिया अथव माना हाणे शौक़ु थियो आहे नंढपण खां वठी सिलसिलो हुयो शौक़ु मूंखे नंढपण खां हुयो मौक़ो मूंखे मिलियो 96 97 माना हुन वक़्तु उस्ताद थी विया प्रोफेसर थी विया नौकिरी मिली 97 में 97 में मां यूनिवर्सिटी पास कई अच्छा अच्छा हा यूनिवर्सिटी पास कई नौकिरी वोकिरी अञा न मिली नौकिरी पोइ मिली आहे 2 साल खां पोइ नौकिरी न मिली छोकिरी मिली हुन वक़्तु सो इहे ज़माने जा किसा न इहे ज़रूरी आहे न उहो आहे पर ऐं साईं त मूंखे ॿुधायो आहे फेयर महबूब साईं ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त माना क्लास फेलो सां शादी करे छॾियईं हा वाह वाह इहे भाग अथई सर प्यार जो परणो हुयो हा सर बसि पोइ ॾाढो माना सुठी ज़िंदगी ऐं बसि पोइ नंढी उमिरि में मुंहिंजी शादी थी 24 सालनि जी GMSC मूं पास कई त 24 सालनि जी उमिरि में 24 साल मुंहिंजी उमिरि हुई त मूं हिकदमि शादी कई भली उमिरि हुई हा मुंहिंजो वालिद साहब नाराज़ थियो चई बाबा अञा नौकिरी कर न मूं चयो बसि बाबा शादी मूंखे करणी आहे अच्छा बाबा बि राज़ी थी वियो मुंहिंजो वालिद साहब अच्छा करणी आहे और साम्हूं वारनि खे करणी बसि पोइ मूंखे करणी ॿिनी ख़ानदानी रज़ामंदी सां हा ॿिनी ख़ानदानी रज़ामंदी सां बाक़ाइदा फैमिली जी रज़ामंदी सां शादी थी पोइ वरी चवंदा आहिनि शादी थींदी आहे त ज़ाल जो भाग पोइ नौकिरी बि मूंखे मिली वई वरी थोरी ॾींहंनि खां पोइ वरी मुंहिंजी छोकिरी मिली पोइ हा छोकिरी मिली पोइ नौकिरी मिली वरी पोइ मुंहिंजी मिसिस खे बि नौकिरी HST मिली वई छो उहा बि MSc पास हुई पर असल में मुंहिंजो जेको शौक़ु हो त आउं MSc करे साइंसदान थियां PhD करियां उहो मुंहिंजो रहिजी वियो चलो शादी कयमि वरी हिकिड़ो ॿारु थी वियो पुटु थी वियो पर मुंहिंजे हुन ख़्वाब खे वरी मुंहिंजे पुटु पूरो कयो मुंहिंजो पुटु सम्झी वियो वॾो थियो त बाबा खे शौक़ु हो PhD करण जो त पोइ अलाह जी महिरबानी उन बि केमिस्ट्री में PhD कई लंडन मां ऐं आउं हिकु उस्ताद माण्हू पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जी स्कॉलरशिप ते उहो लंडन वियो ऐं लंडन मां PhD करे मोटियो ऐं हींअर चाइना में बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पोस्ट डॉक्टर करे पियो ऐं हींअर दुनिया में सुठो साइंटिस्ट मञियो वञे थो जंहिंसां सिंध जो नालो रोशन करे पियो ऐं पाकिस्तान जो नालो रोशन करे पियो ऐं इहो तव्हांखे इहा ख़ुशी थींदी त जेको मुंहिंजो पुटु आहे उहो गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज कासमाबाद मां ई इंटरनरी पास थियल आहे ऐं जॾहिं हुन इंटर ॾिनी त इम्तिहान थींदो त आउं इम्तिहान में न वेंदो हुउसि न कोई कंहिंखे चवंदो हुउसि मूं चयो बाबा पढ़णो आहे त मेरिट ते पढ़ी पंहिंजी महिनत सां अॻियां अचिणो आहे सरकारी स्कूलनि में पढ़ी आहे छो जो असां ख़ुदि सरकारी स्कूलनि में पढ़ियासीं ॿार खे बि सरकारी हा एतिरो हुई त ॿारनि खे तवजो ॾिनीसीं घर में पढ़ाईअ जी मां बि पढ़ियल लिखियल हुई त उन ॿार खे इलाही तवजो ॾिनो ऐं मूं बि ॾिनो पर मूंखां वधीक मां हुननि खे तवजो बात निकली है सर इस दफा की जिंदगी की तो एंटरटेनमेंट का वैसे भी प्रोग्राम होता है तो बच्चों को एंटरटेन करने के लिए बाहर लेके जाते हैं या बच्चे हैं क्या सूरत हाल है आपकी कहाँ पे कौन मतलब शादी वादी की है बच्चे हैं पढ़ते हैं मेरी 3 बेटियां क्या करते हैं किस बड़ी तरह MBA से कर रही है माशाल्लाह जिंदगी गुजर रही है वो पूछ रहा हूँ अल्लाह का शुक्र है सर बाहर काफी ट्रैवल किया अच्छा आई ट्रैवल नियर अबाउट ओवर 70-80 कंट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त तो मेरा ट्रैवल की बड़ा एक स्टडी भी की मैंने डिफरेंट जगह पे जा अच्छा ट्रैवल स्टडी अच्छा और फिर मैंने ज़ियारतें बहुत की दुनिया में और जो मेन जैसे चीज़ें होती हैं जैसे आप लोगों को नहीं प्लान किसका पैलेस है ये जॉगर का नाम क्यों रखा हुआ है ये डिफरेंट में काफ़ी मिनरल वाटर कहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये सारी मैंने काफ़ी ट्रैवल किया हुआ है अच्छा तो मैंने पैगंबर माशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी मतलब बड़ी बारीक बीनी से हर चीज़ जी काफ़ी बस ये लास्ट में जा रहा था जॉर्डन के थ्रू इजराइल का एक चक्कर लगाना था अच्छा क्योंकि वहीं पे बैतुल मुक़द्दस हम देख सकते हैं अच्छा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो जा नहीं सकते तो वहाँ एज ए टूरिस्ट
ایک دن کے لیے جانے دیتے ہیں جارڈن میں. صحیح صحیح تو وہ کرونا آ گیا بس. صحیح سے. ویسے کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ میرا ایونٹ مینجمنٹ کمپنی ہے, بینکٹ ہال ہے. اچھا جی یہ, اور چیئرمین آل پاکستان کے ایسوسیشن. یہ کہاں پر بینکٹ ہال کہاں پر؟ بینکٹ ہمارا سر ایک ڈیفنس میں ہے اور ایک گلشن اقبال میں ہے, سپورا روڈ کے پاس. ماشاءاللہ. ایونٹ ملے گا پیمنٹ کچھ نہ کچھ ڈاؤن پیمنٹ کرنا ہے. سارے ڈی ایچ اے کے کلبس کے بھی پینل پہ ہیں. اچھا اینڈ آئی ایم دا چیئرمین آف آل پاکستان کیٹر ڈیکوریٹر ایسوسیشن. اچھا اچھا ماشاءاللہ. ابھی ہم نے بڑا اسٹرگل کی تھی فار دا اوپننگ آف دس فیلڈ, تو یہ الحمدللہ بڑی فیور کی ہمارے پروونشل گورنمنٹ نے بھی, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی بہت ہمیں دیا. اسد عمر صاحب ہو گئے, ناصر شاہ صاحب ہو گئے, انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہمارے لیے کیا. صحیح صحیح. اور آج ہم وی آر ویری مچ ورکنگ ود ویری اسٹرکٹ ایس او پیز. اچھا. اس کو ہم ڈیلی, جو ہماری ٹیم ہے پوری, وہ دیکھتی ہے, وزٹ کرتی ہے, چیک کرتی ہے, گائیڈ کرتی ہے اپنے گروپس میں کہ آپ نے ایس او پیز کو فالو کرنا اور بڑی گیدرنگس نہیں کرنی. صحیح صحیح. دے آر ویری مچ فالوئنگ دیٹ. صحیح صحیح ماشاءاللہ. زبردست زبردست. صحیح. رزاق صاحب تاں بھلا شادی بھلا کہیں اداکارہ سان کئی اچھا میرے تو بھلا کلاس فیلو دا کم تھی ہو. نہ ماں شادی دیر سان کئی 2014 میں کئی. چلو تو ॿुधायो मुंहिंजे मथां ईअं चए त मां अञा कई न आहे. न उहा कई 2014 में कई. उहा शादी मुंहिंजी सिर्फ़ु 8-10 ॼाणा हली. बसि पोइ उन खां पोइ छो माना छा सभु पंहिंजे रस्ते ते होॾे असांजे पोइ उन खां पोइ भला न बसि पोइ वरी न सफ़ा माना ईअं बसि कयो माना तौबादारी भॼी जान छॾा. भला चवंदा आहिनि बेवस ॿार बि उठनि पिटा गया. तव्हां ते कहिड़ी मयार आहे. उन हवाले सां सही सही. हाणे आज़ादु ज़िंदगी गुज़ारियूं पिया ऐं तालीम ॾांहुं ध्यानु ॾियूं पिया, ॿारनि ते पढ़ाई ते. वाह वाह. सो हाणे जेको आज़ादु ज़िंदगीअ में घणा ड्रामा करे चुका आहियो पहिरियां ऐं जेको मां काफ़ी ड्रामा PTV जे तक़रीबन को 30 खनि मूं प्ले कया, सीरीज़ कया. अच्छा 30. हा बड़ो हिकिड़ो स्कोर आहे 30 माना PTV ते. PTV ते माना छो त PTV ते चांस मिलंदो ई कोन्हे माण्हू खे. हा PTV ते हिकिड़ो ड्रामो हूंदो आहे तॾहिं माण्हू चवंदा आहिनि यार असां PTV जा अदाकार आहियूं. माना वॾनि आर्टिस्टनि सां शरफ़ हासिलु थियो, उन्हनि जूं मोहबतूं मिलियूं मूंखे. साईं मोहम्मद सिद्दीकी साहिबु, तलत हुसैन साहिबु, वॾो ड्रामो हुयो PTV जो. ड्रामे जी ॻाल्हि ते अटक खां फोन आई आहे, अलाए छा चवंदो पुछी वठोसि भला. मोहम्मद असगर आहे, अटक सां फोन आई आहे, अटक खां. सो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सलाम पाकिस्तान, सलाम सिंध. सर वालेकुम तमाम हाज़िरीन इकराम को. थैंक यू सो मच सर. कैसे मिजाज हैं? ठीक है असगर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. माशाल्लाह माशाल्लाह. अटक में भी प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा आप? जी प्रोग्राम कभी कभी प्रोग्राम तो देखता हूँ, शो तो देखता हूँ, लेकिन फोन कभी कभी करता हूँ. अच्छा बस शुक्रिया बहुत वो भी आपका कि आप टाइम निकालते हैं. आज प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे? आज का प्रोग्राम जो है जी बहुत अच्छा है और बहुत बेस्ट है. और शोराए कराम जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं. खास तौर पर जो हजरत अभी कुछ इंफॉर्मेशन दी हैं कि कौम के लीडर, कौम के नौजवान, कौम के साथ इकट्ठे हो जाएं तो कौम की मुश्किलात को दूर हो सकती हैं. बिल्कुल सही बात कही आपने. मेरी 88 साल उम्र है और मैं अभी भी NGO का मेंबर हूँ. माशाअल्लाह. अच्छा कितनी उम्र है आपकी? 88 साल. 88 साल. अच्छा ओह अभी काम कर रहे हैं आप, स्ट्रगल जारी है. अभी भी मैं NGO का मेंबर हूँ. अच्छा. साहब फौजी भी हूँ, साहब का सोल्जर भी हूँ. सर फिर वो साहब का फौजी है ना, तभी सर वो जज्बा है आपके पास. जी बस ये अल्लाह की करमनवाजियां हैं ये. माशाल्लाह. वो डिसिप्लिन, वो मतलब वो एक अलग से ही होता है. तो क्या करते हैं आप NGOs में, क्या काम कर रहे हैं आप? ये बस ये जो कोई ड्यूटी लगा देता है जो मेरी उम्र के मुताबिक है. अच्छा अच्छा माशाल्लाह वो कुछ मैं करता हूँ. अब नौजवानों वाला काम तो मैं नहीं कर सकता. हाँ सही बात है. वो जो बस में हो तो वो बंदा कर सकता है. जी हाँ बिल्कुल. हाँ ठीक जी ठीक. बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बल्कि टेलीफोन कॉल किया आपने, ये भी एक तशरीफ लाने का तरीका है. सो आखिर में जाते जाते सर कैसा आप कोई अच्छा सा मैसेज, कोई पैगाम देना चाहेंगे जो याद रह जाए? कौम बड़ी परेशान है, तो थोड़ा सा एक 12,000 वाला आप जो नीडी एरियाज हैं उसमें ज़रूर एक दफ़ा फिर उसको करें. उससे वो छोटे छोटे मसाइल अपने हल कर लेंगे. फीसेस के बच्चों की, रेंटल्स के इशू, इसके बाद भले आप 2023 तक ना दें. अच्छा ये एक लास्ट दफा दे दें. लोग इस वक्त कोरोना के बाद खड़े नहीं हो पा रहे. सही. जॉबलेस हैं बहुत.
تو یہ آپ کی سپورٹ ہوگی ان کے لیے، اور اتنی اچھی سپورٹ ہو جائے گی کہ وہ انشاءاللہ ان کے لیے 12,000 بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور وہ کھڑے ہو جائیں گے. اور اس وقت تک کورونا کے اوپر گورنمنٹ کا اور بھی کنٹرول آ چکا. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ضرور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ہم سب ٹیکس دیتے ہیں، سب اپنی طرف سے پوری فیور کرتے ہیں گورنمنٹ کی. تو اب گورنمنٹ کی ان لوگوں کو ضرورت ہے اور ان کی ضرورت پوری کریں. اور اس میں پروونشل گورنمنٹ بھی اپ سٹینڈ لے. جیسے فیڈرل نے 12,000 کر دی تو پروونشل 5,000 کچھ کر. نیڈی ایریاز میں، گوٹھوں میں، کچی بادیوں میں ان کے جھونپڑیاں ٹوٹ چکی ہیں. این جی اوز کتنا کام کر دے گا آپ بتائیں نا، کتنی کنسٹرکشن کر کے دے سکتا ہے. کسی کے پاس 1100 ارب نہیں ہے. صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ ضرور اس میں پرائم منسٹر صاحب دیکھیں. صحیح بالکل بالکل. تھینک یو صاحب، تھینک یو سر. عبدالرزاق صاحب تव्हां जो को मैसेज आख़िर में. साईं मां लतीफ़ साईं जो शेर चवंदुसि, तव्हांखे ॿुधाईंदुसि. लतीफ़ सरकार चए थो त मतां ॾिसी मोह जी दुनिया वारो धज, मतां ॾिसी मोह जी दुनिया वारो धज, कर जुदा पाण खे जीअं छाई करे छॾ, मुठियूं भीड़े भॼ, वक़्तु वञे थो वेसरा. माना लतीफ़ साईं सरकार चए थो त इहा दुनिया जी ॾेख वेख खे छॾे ॾे, तूं पंहिंजो पाण खे सुञाण, तोखे छा करिणो आहे. तोखे ख़ुदा ॾे वापसि हलणो आहे, नेकी जी राह ते हलणो आहे. वक़्तु वञे ई थो. इहे कूड़ा ठाठ बाट, इहे माण्हुनि जूं चालाकियूं, बदमाशियूं, बेईमानियूं उन्हनि खे छॾे ॾे. तूं सिधी राह ते हल ऐं तकिड़ो हल, पहुच उन मंज़िल ते जिते तोखे पहुचणो आहे. ऐं जीअं छॼ, जीअं असां छॼ माण्हू छंॾींदियूं आहिनि, उन मां मिटी धूड़, छाई माना धूड़, ऐं उहो सफ़ाई कंदियूं. त इहा जेका धूड़ जेका आहे इन खां पंहिंजो पाण खे परे कर. इहा धूड़ मुंहं ते लॻे त निकिरी न सघंदी. इन खां परे भॼ. नौजवाननि खे इहो ई मैसेज आहे त नौजवाननि जो वक़्तु वञे पिए थो. जेतिरो पंहिंजो पाण खे सम्झी सघनि था, तालीम ते अचनि, हक़ ते अचनि, सच ते अचनि, सुठी राह ते हलनि, नंढनि वॾनि जी इज़त कनि, माउ पीउ जी इज़त कंदा त इंशाअल्लाह ताला दुनिया में किथे बि नाकामी न ॾिसंदा. सही. वक़्तु बि वञे थो असांजे प्रोग्राम जो बि. आख़िर में तव्हां बि साईं महबूब साईं आख़िर में को मैसेज ॾियणु. सर आउं बि साईं रज़ाक साहब वारी ॻाल्हि खे कंटिन्यू कंदुसि. टाइम इज़ मनी. नौजवाननि खे असांजो न्यापो आहे, मैसेज आहे हिकु उस्ताद जी हैसियत में, त उबतिन सुबतिन हरकतुनि या टाइम विञाइण खां पासो कनि ऐं पंहिंजी पढ़ाई ॾे तवजो ॾियनि, महिनत कनि. ऐं सरकारी कॉलेजनि में सुठो हींअर माहौल आहे ऐं अॻियारो हीअं माहौल न आहे त उस्ताद अचे ऐं पढ़ाए न. हींअर बाक़ाइदा तमामु सुठो माहौल थी वियो आहे. त ॿार महिनत कनि ऐं इंशाअल्लाह ताला उहे महिनत कंदा, पंहिंजे वॾनि जी इज़त कंदा, कामयाबी महिनत में ऐं सुठो मुक़ाम हासिल कंदा. थैंक यू महबूब साईं. रज़ाक साईं लख तोरा. केस सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम तशरीफ लाए. बहुत सारी बातें रह जाती हैं, प्रोग्राम का दौरान ये थोड़ा कम था. सो मरम साईं आख़िर में तव्हां खां कलाम ॿुधंदासीं जीअं ॿुधाईंदा आहियो. सो असां तव्हां खां मोकिलायूं था हयाती बख़ैर. इंशाअल्लाह सुभाणे वरी इन ई प्रोग्राम में तव्हांजी असांजी मुलाक़ात थींदी. असां कोशिशि कंदा आहियूं त तव्हांखे एंटरटेन बि कयूं, तव्हांखे ॼाण बि ॾियूं. सो अॼोको प्रोग्राम बि इन ई लवाज़मात ते पूरो लथो हूंदो. असांखे उमेदु आहे फीडबैक तव्हांजो असांखे घुर्बल हूंदो ऐं इंतज़ारु कंदासीं तव्हांजे फीडबैक जो. सुभाणे वरी मिलूं था. पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलि वारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो, बीमारनि जो, बुज़ुर्गनि जो, ऐं उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो जिन जो ख़्यालु रखण वारो केर बि कोन्हे. इरशाद जागीरानी तव्हां खां मोकिलाए थो. अल्लाह वाही जिए लतीफ़ जिए मिठी ॿोली. मनी न मेहरबान, मां त मिंथ तो करे छॾियां, मां त मिंथ तो करे छॾियां. तूं मनी न मेहरबान, तूं मनी न मेहरबान, मां त मिंथ तो करे छॾियां, मां त मिंथ तो करे छॾियां. न पी सघे थो ढकी, हिकु त तूं अॻे हसी, ॿियो न पी सघे थो ढकी. टियों वरी घुमी थो नाज़ सां,
वरी घुमी तो नाद सां मां त मिंथ तो करे छॾियां मां त मिंथ तो करे छॾियां तूं मनी मनी न महिरबान तूं मनी मनी न महिरबान मां त अर्ज़ थो करे छॾियां मां त मिंथ तो करे छॾियां अजीब ॿियो तही बुखारिया ग़रीब हिकु तही इश्क अजीब ॿियो तही बुखारिया ग़रीब बस अजीब हाँ गरीब हाँ बस अजीब हाँ गरीब हाँ मां त मिंथ तो करे छॾियां मां त मिंथ तो करे छॾियां तूं मनी मनी न महिरबान तूं मनी मनी न महिरबान मां त मिंथ तो करे छॾियां मां त मिंथ तो करे छॾियां मां त मिंथ तो करे छॾियां हाय मां त मिंथ तो करे छॾियां सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उॾरे थो हरी नारी रब खे सवा